students on the second day of online orientation program on JGET and CMI database, which is organized by Center for Agricultural Market Intelligence, Anand Agricultural University, Anand. I thank each and every one of you for joining this program. Now, I would like to invite Mr. Prashant Joshi, Assistant Vice President Sales at Center for Monitoring Indian Economic Private Limited, Ahmedabad, for our technical session 3. Over to you, Prashant sir. Thank you so much, Shraddha ma'am and Yogesh sir, for the introduction and for giving us this almost half day for this training session. And I'm really glad because we had subscribed this database, and now I think people will start using this database as well once we complete this training. Right. So I'll start with the introduction of the database which we will be covering today. Because yesterday we had discussed two databases, rather three, including CPHS. But today we'll be covering most of the other databases which you will really will get benefited out of it. So I will just share my screen. Okay, I hope the screen is visible to all. Yeah. Okay, so today we will cover industry outlook database, economic outlook, states of India, and trade DX, which are the other databases subscribed by AU and Hypecast. So I'll introduce what is there in industry outlook first, and then I'll go to the actual data. So in case if you want to understand that what is the performance of any selected industry, any given industry, or you want to see who are the players in that industry. In that case, you'll be able to get all the data from here. As discussed yesterday, again, I'll be covering this session in multiple languages, including Hindi and English. So you want to understand that what is the growth of the industry, what is the market size, what is the market share, who are the players in this industry, and what is the market share that they are holding. So all such data would be available in industry outlook. Now, what sort of data is there that I'll take you through? I am sure many of you must have registered yourself to access this particular database. Okay, so in industry outlook, we cover close to 209 industries, including all those food and agro-based products and many of the non-agriculture industries. So I'll start with the introduction of some of the industries which may be of your interest. I'm not very sure, but you can just look at those industries. And if you want me to take you through some specific industries, then also please let me know. I can show those industries as well. So basically, in industry outlook, you can see it's covering data of 209 industries. It includes service sector as well, right? So for example, you want to look at some logistics sector, right, and their performance. So in that case, you will get such data from this industry outlook, right? Plus, there could be some other like transport equipments or maybe some electricity generation or something. So all these industries are covered here in industry outlook. Now, what sort of data is there? So you can see various tabs. जैसे हमने कल देखा था कि जैसे कि commodities database है, उसमें simply आपको एक कोई भी appropriate tab में जाना है और उसके अंदर सारा डेटा आपको एनालाइज करना है या फिर उसका डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो उस केस में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि आपके लिए क्या डेटा यूजफुल है. सो आई विल जस्ट शो यू कि क्या क्या डेटा है. सो बेसिकली अभी यहाँ पे हम कोई इंडस्ट्री सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे फूड एंड एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स, राइट. अगर आपको पता नहीं है कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे क्लासिफाई है, सो दिस इज बेसिकली ट्री स्ट्रक्चर जहाँ पे आपको अलग अलग इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन मिलेगा. अगर आपको समझना है कि अभी हमने से फॉर एग्जांपल स्टील है या दूसरा कोई इंडस्ट्री उसको कहाँ पे क्लासिफाई किया है, तो उस केस में आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं. सपोज आई वांट टू सर्च अबाउट स्टील, आई विल जस्ट सर्च इट हियर एंड इट विल गिव मी वेयर वी हैव क्लासिफाइड स्टील. ठीक है, तो ऐसा हर एक इंडस्ट्री का हमने एक ट्री व्यू बनाया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है, वहां से आप ये डेटा पूरा देख सकते हैं. अभी हमको अगर हमारे लिए जो इंटरेस्ट का है, हमारे लिए जो काम का है, इमीडिएटली जो हमको डेटा रिक्वायरमेंट हो सकता है, राइट, दैट कुड बी अंडर फूड एंड एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स. सो मैं यहाँ पे जाता हूँ फूड एंड एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स.
which is classified under manufacturing and there is sub classification called as food and agro based products. उसके अंदर आपको जो भी सपोज आपको चाहिए वेजिटेबल ऑयल्स एंड प्रोडक्ट्स या आपको चाहिए डेयरी प्रोडक्ट्स या शुगर या व्हाटएवर इंडस्ट्री यू वांट टू सिलेक्ट, सो वो सिलेक्शन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी आपको देखना है कि ये इंडस्ट्री का अभी का सिनेरियो क्या है, व्हाट इज द स्टेटस इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट और मे बी हु आर द प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे कि अवंती फीड्स, राइट, तो उनका क्या परफॉर्मेंस वगैरह है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पे, राइट, इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट का कुछ, सो ये सारे जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि टाइटिंग्स होती है, सो टाइटिंग्स आर द स्मॉल आर्टिकल, स्मॉल स्निपेट्स जो आप समझ सकते हैं कि ये डेटा या ये कोई न्यूज़पेपर जो न्यूज आया है उसमें से हमको कैसे उसका क्रक्स अंडरस्टैंड करना है। सो यू कैन गो टू एनी न्यूज, राइट, सपोज ये एक न्यूज है, क्रूड पाम ऑयल प्राइसेस राइज बाय दिस परसेंट, दिस मच परसेंट, राइट, तो आपको अगर देखना है ये आर्टिकल आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। अभी काफी सारा मार्केट इंटेलिजेंस हमारी टीम है जो कलेक्ट करती है, राइट, वी हैव NCDX प्रोजेक्ट, तो वहां से भी हम कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं और कुछ हमारा टाइप्स रहते हैं, तो वहां से आपको या कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन से वहां से हमको ये डेटा मिल सकता है, राइट। तो ऐसा एक डेटा है जो पाम के रिलेटेड है, तो ऐसा आप टाइडिंग्स पढ़ेंगे सो यू कम टू नो कि भाई क्या ये सेक्टर का स्पेसिफिक व्यू है अभी। ठीक है, so tidings are there, market intelligence as I was mentioning, you can also get some intelligence about what is happening in the sector। ठीक है, सो ऐसे अलग अलग सोर्सेज से हम डेटा कलेक्ट करते हैं और ये डेटा को स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में आपको पुट अप किया है, तो यू कैन रेडली गो एंड अंडरस्टैंड एनालाइज दिस पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, तो हम हमारी टीम अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे भी काम करती है, तो प्रोजेक्ट ये जो उसका प्रोजेक्ट है विदिशा में, राइट, तो उसका प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, सो ऐसा कोई भी मार्केट इंटेलिजेंस है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, करेक्ट। सो अगर आपको देखना है कि सो दिस वाज मोर ऑफ टाइडिंग्स, आपको फर्दर एनालिसिस करना है कि अभी ये इंडस्ट्री, ये सेक्टर, स्पेसिफिक इंडस्ट्री कहाँ पे जा रहा है, सो इन दैट केस यू कैन क्लिक हियर ऑन ओवरव्यू। ठीक है, तो सपोज ये यहाँ पे एक आर्टिकल दिया है which talks about vegetable oil production rises by 15.5% in oil year 1920, करेक्ट। तो अगर आपको ये अभी न्यूज समझना है कि क्या है, राइट, व्हाई वी आर सेइंग दैट द ऑयल प्रोडक्शन हैज गॉन अप, राइट, तो उसके लिए आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, आपको पता चलेगा कि अभी क्या क्या हो रहा है इंडस्ट्री में। ठीक है, विच आर द फैक्टर्स विच आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली whatever is there impacting or affecting the industry, right, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे rises in price, correct, तो अलग अलग टाइप के जो ऑयल्स है, एडिबल ऑयल्स है, राइट, तो उसका अभी क्या सिचुएशन है, and then these are about the imports and the numbers here, like this chart is basically the till 1920 we got the data, और यहाँ पे आपको जो चार्ट्स दिख रहे हैं ये 2021, 2 and 3, these are the forecasted number कि अभी edible oils के import बढ़ेंगे, क्या होगा, right, so we are expecting that import will increase in next few years as compared to 1920, correct। So with these facts and figures you can get all the analysis, you can see the numbers like total production and edible oils and non edible oils, ऐसा हर एक क्लासिफिकेशन आपको देखना है, तो हमारी कंपनी जो अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ डेटा हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन से कलेक्ट किया होगा, राइट, ऐसे अलग अलग सोर्स, कुछ कंपनी से हमको इन्फॉर्मेशन मिलता होगा, तो ऐसे अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट किया और उसका आपको फोरकास्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, सो यू कैन गो एंड अंडरस्टैंड सम आर्टिकल्स व्हिच आर अवेलेबल इन ओवरव्यू टैब। उसके अलावा आपको देखना है ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सेल्स। ठीक है, इंडस्ट्री का सेल्स ग्रोथ कैसा है, सपोज अभी आप देखेंगे 18-19 में there was a good growth in terms of sales, but अगर 90-20 का हम देखेंगे तो there is a some degrowth as compared to previous year। ठीक है, तो ऐसा आपको एनुअल सेल्स का एनालिसिस करना है, क्वार्टरली सेल्स का कुछ एनालिसिस करना है। ठीक है, अभी आप देखते हैं कि यहाँ पे 21 मार्च क्वार्टर में there was sharp increase in the quarterly sales growth। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको एनालिसिस करना आप कर सकते हैं, so each and every data points are there। ठीक है, प्रोजेक्ट्स अभी कितने आ रहे हैं ये पर्टिकुलर सेक्टर में,
right? So once the capacity is getting added, so it will further boost the industry's competitiveness, right? तो ऐसा आपको एनालिसिस करना है. फिर आपको नेट फिक्स्ड एसेट्स में क्या हो रहा है, प्रॉफिट का ग्रोथ कैसा है, राइट? सो यू कैन सी देयर इज अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ इन लास्ट क्वार्टर, इन मार्च क्वार्टर. उसके बाद में इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी रेशियो कैसा है अभी, उसका मिक्स कैसा है, या मार्जिन्स कैसे है, राइट? क्वार्टरली मार्जिन्स कैसे है, इंपोर्ट में अभी क्या हो रहा है, करेक्ट है? सो दिस आर द नंबर्स टिल अप्रैल 21, राइट? उसके बाद में वी हैव गिवन सम फोरकास्टेड नंबर्स, ठीक है? सो आप ऐसा कुछ एनालिसिस भी अपने हिसाब से कर सकते हैं. व्हाट इज द नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑफ दिस इंडस्ट्री, उसके इंडस्ट्री के मार्जिन्स, राइट? और जनरली हम क्रूड पाम ऑयल हम ये इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम मलेशिया, तो उसका अभी का क्या सिचुएशन है, अभी प्राइसेस वहाँ पे बढ़ रही है, कम हो रही है? तो अगर वहाँ पे प्राइस बढ़ रही है तो इट इज ऑब्वियस दैट आवर प्राइसेस विल आल्सो गेट इंपैक्टेड, राइट? तो ऐसा आप अलग अलग हिसाब से एनालिसिस करके ये पूरा डेटा देख सकते हैं. अभी आपको यहाँ पे जो दिख रहा है दैट इज मोर ऑफ अ चार्ट्स, ये अलग अलग चार्ट्स है. सेम वे आपको देखना है कि टेबल्स, ठीक है? कि ये हमने जो चार्ट्स प्रिपेयर किए हैं उसका डेटा कौन सा है, तो ये डेटा भी आप यहाँ पे जो एक टेबल करके यहाँ पे एक यूएस टेबल्स करके ऑप्शन है उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? सो ये सारे टेबल्स प्लस चार्ट्स विल हेल्प यू टू गेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, करेक्ट? अभी इसके अलावा आपको फॉर एग्जांपल समझना है कि ये इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या है, इसका मार्केट साइज क्या है, मार्केट शेयर क्या है हर एक प्लेयर का, राइट? तो वैसा आप एनालिसिस कर पाएंगे यूजिंग द नेक्स्ट टेप व्हिच इज कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंशियल्स, ठीक है? अभी एनुअल फाइनेंशियल्स में आपको क्या मिलेगा, देयर आर टू थिंग्स. वन इज एग्रीगेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर आपको इंडस्ट्री का एग्रीगेट देखना है वो केस में आप यहाँ पे एग्रीगेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जा सकते हैं, राइट? या फिर आपको देखना है कि कंपनी वाइज फाइनेंशियल कि इसमें अभी कौन कौन से प्लेयर्स है, उसका हर एक का परफॉर्मेंस क्या है, तो वो केस में आप कंपनी फाइनेंशियल्स में भी जा सकते हैं, राइट? अभी इसमें क्या क्या डेटा अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. सो सपोज अभी आपको देखना है कि इंडस्ट्री का सिंस 1990 ऑनवर्ड्स ग्रोथ क्या है उनका, ठीक है? तो आप यहाँ पे अलग फ्रीक्वेंसी में डेटा अवेलेबल है. कुछ डेटा होंगे जो मंथली फ्रीक्वेंसी में भी अवेलेबल है, कुछ क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी में भी डेटा अवेलेबल है, ठीक है? अभी आपको समझना है कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री का ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा रहा है, या उसका मार्केट का साइज क्या है, तो वो केस में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट क्लिक हियर ऑन एनुअल टेब, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको जो टेबल दिख रहा है दैट इज बेसिकली 1991 ऑनवर्ड्स इंडस्ट्री का अभी का ग्रोथ क्या हुआ है. तो यू कैन एनालाइज ईच एंड एवरी ईयर्स ग्रोथ. तो अगर आपको देखना है लेटेस्ट क्या है, अभी सिनेरियो क्या है, राइट? सो वी कैन अंडरस्टैंड कि 1890 में देयर वाज अ गुड ग्रोथ, बट एज कंपेयर टू 1819 यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है इन टर्म्स ऑफ इनकम, ठीक है? और अभी यहाँ पे 2021 का जो आपको डेटा दिख रहा है इट्स अ शॉर्ट सैंपल, ताकि काफी सारे लाइक अपार्ट फ्रॉम लिस्टेड कंपनीज काफी सारी कंपनीज ने डेटा नहीं दिया होगा, राइट? तो अगर आपको समझना है कि कितनी कंपनी का डेटा मेरे पास आया है, राइट, तो वो केस में आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ही कंपनी का भी डेटा आया है. बट अगर आप लास्ट ईयर का कंपैरिजन देखेंगे या उसके पहले के साल का कंपैरिजन यहाँ पे देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पे दिखेगी. मींस 199 कंपनीज का लास्ट ईयर का डेटा हमारे पास आया था. सो ये जो शॉर्ट सैंपल है इसका डेटा जब तक मेरे पास वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं आएगा तब तक इसको हम शॉर्ट सैंपल बोलेंगे. क्लोज टू 80% कंपनीज तक का हमारा मींस 199 के 80% जितनी कंपनीज का हमारे पास डेटा नहीं आएगा तब तक ये शॉर्ट सैंपल रहेगा. एंड वंस वी गेट द फुल डेटा यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अभी ये फाइनल डेटा है 2021 का, ठीक है? सो ये हिसाब से आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं. अगर आपको अभी सो दिस इज ग्रोथ, दिस अ परसेंटेज चेंज फ्रॉम 1991 टू 21, करेक्ट? ये जैसा आपको ये फीचर्स पता है, यू नो दिस थिंग्स लाइक यू कैन डाउनलोड दिस डेटा इन एक्सेल, यू कैन डाउनलोड अ टेक्स्ट फाइल, राइट? और ऐसा कुछ भी आपको अलग अलग इंडिकेटर्स चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं.
हाँ वादन तारे पास जेरॉक्स है ना? हेलो हाँ एक मिनट ताने आप हेलो हेलो श्रद्धा हेलो हाँ हेलो કંઈક हेलो हेलो हाँ સર તમારો અવાજ આવે છે? હા આવે છે પ્રશાંત સર પાર્થ સર ને ઇન્વાઇટ કરીને એમને કે થોડુંક બોલવાનું છે સ્પીચ માટે ઇન્વાઇટ પણ સર એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન નાવ આઈ વેલકમ કરીને કે હેલો પાર્થ હેલો યસ સર હા સર આઈ એમ ઓડિબલ એમને જોઈન્ટ થાય ત્યાં સુધી તમે થોડીક સ્પીચ આપી દો ને સર 2 મિનિટ એકચ્યુઅલી પ્રશાંત સર નું કદાચ લેપટોપ થોડું હેંગ થઈ ગયું હશે તમે તમારી રીતે થોડુંક સીએમઆઈ અને ડેટાબેઝ ચાલુ કરી શ્યોર સર શ્રદ્ધા એમને વેલકમ કરો હા હેલો Okay, so now I would like to invite Mr. Parth Rana for tell us about CMIE activities. Over to you, Parth sir. श्योर मैम थैंक यू सो मच श्रद्धा मैम सो जैसा कि आप देख रहे थे इंडस्ट्री आउटलुक जो सर दिखा रहे थे कि आप कैसे फिनेंशियल्स के लाइक एग्रीगेट फिनेंशियल्स एंड कंपनी के फिनेंशियल्स देख सकते हो तो उस तरह से हमारे पास टोटल 209 इंडस्ट्रीज है अंडर इंडस्ट्री आउटलुक राइट और जो सारा स्ट्रक्चर वो पूरा ट्री बेस है yes I'm audible Parth, your screen is not visible. Wait, I will join. Okay sir okay Sorry, there was some technical glitch. Sorry for that. Okay, so now in case if you want to understand that what is happening with the market size, right? Market का size क्या है? तो क्या होता है कि over the period of time कोई भी industry है उसके अंदर कुछ players ऐड होते हैं, कई बार कुछ mergers हो जाते हैं, right? कोई कंपनी एक्वायर हो जाती है तो उसकी वजह से नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ते हैं या कम होते हैं, उसकी वजह से मार्केट का साइज बढ़ सकता है या कम हो सकता है। ठीक है, तो अभी आपको समझना है कि अभी का मार्केट का साइज क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको देखना है कि क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है कम हो रहा है। जैसा हम यहाँ पे देख रहे थे कि 199 कंपनीज, बस उसके पहले के साल में 205 कंपनी थी, राइट। बट 1920 being a bad year for many of the corporates, there are chances that companies might have left this business, right? So there are possibility. I cannot say the exact numbers or the figures, right? But अगर आपको देखना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, प्लेयर्स बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, उनकी कम हो रही है, राइट, तो वो आपको यहाँ से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम अभी देख रहे हैं, तो ये आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सारा डेटा। अभी आपको देखना है कि कुछ चार्ट्स हैं, हमने रेडीमेड चार्ट्स आपको मिल जाएंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकम में क्या चेंजेस हुए हैं, सेल्स क्या हुआ है, राइट। यहाँ पे अपने साइड पे ये सारे चार्ट्स दिए हैं। अगर इसको भी आपको ओपन करना है, डाउनलोड करना है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चार्ट्स, अगर ये चार्ट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू एज इमेज में, तो उसको आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसा हमने कल देखा था। सिमिलरली द फीचर रिमेन्स द सेम, राइट। अभी आपको ऐसा अंडरस्टैंड करना है कि फॉर एग्जांपल ये जो डेटा है, राइट, अभी हमने देख लिया कि एनुअल फाइनेंशियल मींस एग्रीगेट फाइनेंशियल्स में हमने देखे एनुअल डेटा क्या है। सिमिलरली क्वार्टरली फाइनेंशियल्स आर आल्सो देयर। अगर क्वार्टरली आपको व्यू लेना है तो आप इंडस्ट्री का क्वार्टरली ग्रोथ भी देख सकते हैं, उस पे हम अभी नेक्स्ट आएंगे। उसके पहले आपको अगर समझना है कि अभी ये इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्लेयर्स है उसका हर एक का परफॉर्मेंस क्या है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंपनी फाइनेंशियल्स करके एक ऑप्शन दिया है, वहां पे जाके आप कंपनी वाइज डेटा देख सकते हैं। जो हमने एग्रीगेट जनरेट किया है वो क्या है, बेसिकली वो सभी प्लेयर्स का परफॉर्मेंस मिला के हमने एग्रीगेट जनरेट किया था। सिमिलरली अगर आपको देखना है कि कंपनी वाइज क्या फाइनेंशियल्स है, तो आप यहाँ पे आएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर समरी एंड देन क्लिक ऑन एनुअल। तो आपने जो भी इंडस्ट्री सिलेक्ट किया है स्पेसिफिकली उसका ही डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अभी सपोज आपको समझना है कि फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्री का अभी टॉप प्लेयर कौन है। सो कैन यू सी अदानी विल्मार लिमिटेड। अभी अदानी विल्मार हमने
कैसे डिसाइड किया, तो उसकी साइज के बेस पे हम उसको रैंक देते हैं. सो यू कैन सी रैंक बाय साइज. अभी साइज क्या होता है? साइज इज बेसिकली लास्ट 3 इयर्स टोटल एसेट्स प्लस लास्ट 3 इयर्स टोटल इनकम. ये दोनों को हम एवरेज आउट करके आपको पूरा डेटा हम यहाँ पे साइज वाइज आपको प्रोवाइड करते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी साइज वाइज कौन सी कंपनी इज रैंक फर्स्ट, राइट. तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं. प्लस आपको अगर डिटेल चाहिए, फॉर एग्जांपल इनका इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, राइट, फाइनेंशियल चार्जेस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट. अगर फर्दर आपको सॉर्टिंग करना है बाय पेट और समथिंग और बाय सम ऑफ द इंडिकेटर्स, तो आप जैसा हमने कल देखा था वो डबल क्लिक करके आप उसको वो इंडिकेटर पे डबल क्लिक करेंगे तो सॉर्टिंग भी हो जाएगा उसके अंदर, सो दैट यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड. जैसे कि रुचि सोया है, राइट, तो रुचि सोया इज हैविंग हायर पेट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देन अदानी विल्मा लिमिटेड. ठीक है, तो अभी आपको ऐसा कुछ अंडरस्टैंड करना है कि भाई क्या है प्रॉफिट वाइज, क्या है, कौन सी कंपनी ज्यादा है, पीबीडीटा वाइज कौन सी कंपनी ज्यादा है, राइट. बट रैंक वाइज अगर आप देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड एसेट बेस अदानी विल्मा इज हैविंग हाईएस्ट मार्केट साइज, करेक्ट. तो ऐसा आपको अभी यहाँ पे कंपनी वाइज देखना है. कोई भी यू मस्ट बी डूइंग मेनी कंपनीज, राइट. गोकुल एग्री इंटरनेशनल है, ऐसे काफी सारी कंपनीज है जो आप रेगुलरली देखते होंगे, एनालाइज करते होंगे. तो ऐसा आपको कुछ एनालिसिस करना है तो आप ये डेटा यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं उसके एनालिसिस के लिए. ठीक है, देन you want to understand, so we have seen company wise data, we have understood what is happening to industry size, right. Then if you want to understand कि अभी हर एक प्लेयर का ग्रोथ कितना है, इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना है, राइट, या कंपनी का ग्रोथ हम देख रहे हैं तो कंपनी का यहाँ पे परसेंटेज का टैब है, तो वहाँ पे आप कंपनी वाइज भी ग्रोथ देख सकते हैं. तो ऐसा आपको हो सकता है, सपोज अभी इन टर्म्स ऑफ साइज अदानी इज फर्स्ट, राइट, but in terms of growth there could be some other companies which are having higher growth. तो यहाँ पे क्या है, टोटल इनकम है, तो परसेंटेज चेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 2020 का डेटा है, तो उसके प्रीवियस ईयर में कंपैरिजन हमको मिलेगा कि 2020 मींस 18-19 की कंपैरिजन में 2020 में उसका कितना उसका इनकम बढ़ा है, राइट. तो ऐसा ये आप कंपैरिजंस यहाँ से ले सकते हैं सब. ठीक है, सो हर एक कंपनी का आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा, correct. Abhi, so we have understood that annual aggregate data is available. We have understood that industry wise overview and analysis is available. Now let us understand कि company का quarterly performance क्या है, right, या फिर industry का quarterly growth क्या है. जो भी listed companies है उसके लिए ही mandatory है कि वो quarterly data file करें. तो हमारे पास जो भी डेटा आएगा यहाँ पे आप अगर क्वार्टरली ग्रोथ देखेंगे, सो दैट वुड बी अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड कि ओवरऑल ग्रोथ क्या हो रहा है इंडस्ट्री का. ठीक है, अभी सपोज यहाँ पे आप जैसा हमने वहाँ पे एनुअल में देखा था, सिमिलरली यहाँ पे क्वार्टरली पे क्लिक कर सकते हैं. राइट, सो अभी सपोज आपको समझना है कि ये इंडस्ट्री का क्वार्टरली ग्रोथ क्या है, right. So close to 40% growth was there in last quarter, that is March 21 quarter. ठीक है, और अभी आपको देखना है कि उसका फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस कितने बढ़े हैं, राइट, या फिर कोई स्पेसिफिक, बिकॉज दिस इज हाईली आई वुड से एडवर्टाइजमेंट ओरिएंटेड एफएमसीजी इंडस्ट्री, राइट. तो उसका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा होगा, राइट. तो कितना बढ़ा है, बाय 36% इट इंक्रीज्ड, राइट. तो इंडिकेटर्स सारे ऑलमोस्ट आपको पीएनएल के मेजॉरिटी इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. देन यू कैन एनालाइज, और अगर आपको फर्दर इंडिकेटर्स चाहिए तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो वी हैव सिलेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर समरी. अगर आपको बैलेंस शीट का चाहिए तो आप यहाँ पे हाफ ईयरली डेटा देख सकते हैं. सिमिलरली आपको कुछ रेशियोज का एनालिसिस करना है, राइट, लिक्विडिटी है फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिटेबिलिटी का आपको एनालिसिस करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हैं. ठीक है, so there are various options, various steps which are available. You can select appropriate based on your requirement. You can select what is happening with the industry. ठीक है, तो ओवरऑल इंडस्ट्री का अभी पेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम कितना है, राइट, या एक्सपोर्ट इनकम कितना है, राइट. ऐसा कुछ भी आपको एनालिसिस करना है, दैट यू कैन गो एंड अंडरस्टैंड. ठीक है, सो दिस आर मोर ऑफ फाइनेंशियल्स, बट अगेन दिस वुड बी रियली हेल्पफुल. अगर आपको ये डेटा, इंडस्ट्री का डेटा, कोई ऐसा सोर्सेस नहीं है कि जहां से आपको रेडीली मिल जाए. सो इंडस्ट्री आउटलुक इज द ओनली सोर्स जहां पे आपको हर एक इंडस्ट्री का डिमांड सप्लाई मिल जाएगा, हर एक इंडस्ट्री का कंपनी का परफॉर्मेंस मिल जाएगा, मार्केट शेयर, मार्केट साइज सब मिल जाएगा.
देन यू वांट टू अंडरस्टैंड कि जैसा हमने देखा था कि इंडस्ट्री का क्वार्टरली ग्रोथ क्या है, वैसा ही आपको समझना है कि इंडस्ट्री का अभी आपको समझना है फाइनेंशियल्स क्या है, उसके प्लेयर्स का फाइनेंशियल्स क्या है, राइट। तो उस केस में आप यहाँ पे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करके हैं, उसमें जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल क्वार्टरली, राइट। तो क्वार्टरली उसका अभी आपको परफॉर्मेंस देखना है कि उसके जो भी प्लेयर्स है, जैसे कि हर एक कंपनी लिस्टेड नहीं होगी जो भी ये इंडस्ट्री के अंदर होगी, राइट। तो ये कौन कौन सी कंपनीज है जो लिस्टेड है और उसका अगर आपको परफॉर्मेंस देखना है तो दिस आर ऑल द लिस्टेड कंपनीज। और उसने जब भी जो साल का या क्वार्टरली जब तक का उसने डेटा फाइल किया है, सपोज अभी वैसे जुलाई क्वार्टर भी जून क्वार्टर भी एंड हो गया है, राइट, वी आर इन जुलाई। तो जून का डेटा अगर हमारे पास आएगा यहाँ पे तो विल अपडेट दैट डेटा, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली अपडेटेड ऑन रेगुलर बेसिस, राइट। और आप देख सकते हो यहाँ पे 9 तारीख को हमने अपडेट किया था, 9 जुलाई को ये पर्टिकुलर डेटा हमने अपडेट किया था, करेक्ट। अभी आपको देखना है कि ये इंडस्ट्री का एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर क्या सिनेरियो है, करेक्ट। एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर हमारा ये इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स है उसका कुछ सेल्स बढ़ा है, इनकम बढ़ा है, या फिर आपको देखना है उसका प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह बढ़ा है, राइट। तो ऐसा एक क्विक कंपैरिजन आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप देख सकते होंगे कि गोकुल एग्रो रिसोर्सेज, राइट, उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वेंट टू हाई लाइक क्लोज टू 104%, राइट। रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस, राइट। तो ये जो रॉ मटेरियल कुछ इंपोर्ट भी करते होंगे तो वो रॉ मटेरियल्स का भी एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो ऐसा आप मल्टीपल इंडिकेटर्स को एक साथ में लेके भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। Then as compared to previous quarter, QOQ percentage changes as compared to previous quarter, ये पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री की कंपनीज है उसका अभी क्या ग्रोथ हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रुचि सोया का क्लोज टू 8% ग्रोथ हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, करेक्ट। सो ये अलग अलग इंडिकेटर्स के टेब्स है जिसमें आप जाके देख सकते हैं जो अप्रोप्रिएट आपको इंडिकेटर चाहिए दैट यू कैन सिलेक्ट, ठीक है। दूसरा आपको कई बार ऐसा होगा कि आपको देखना है कि फॉर एग्जांपल अभी ये इंडस्ट्री का एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह क्या है, कुछ रेशियोज आपको एनालाइज करना है, जैसे हम बैलेंस शीट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो सारे बैलेंस शीट के इंडिकेटर्स, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड आपको समझना है, राइट, और एक कंपनी का, तो आप यहाँ पे उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद में so we have seen annual growth and annual performance of the companies. We have understood quarterly growth of the industry and quarterly performance of the industry players. उसके बाद में अगर आपको समझना है कि what are the stock returns, ठीक है, इसमें जो listed players है उसका परफॉर्मेंस समझना है, तो हम क्या करते हैं, we have created some sector wise index, right, और sector wise index जिसमें आपको समझना है कि अभी ये इंडेक्स कैसा मूव कर रही है एज कम्पेयर टू द मार्केट प्लेयर्स, राइट, या फिर एज इन जो भी प्लेयर है उसके कंपैरिजन में उसका कितना ग्रोथ हो रहा है, राइट। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस है यहाँ पे, एक तो है रिस्क एंड रिटर्न इंडिकेटर्स और दूसरा है आपको मार्केट के ऊपर एनालिसिस कुछ करना है, तो आप यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर ले सकते हैं। अभी यहाँ पे अलग फ्रीक्वेंसी में डेटा है, मींस वीकली, डेली फ्रीक्वेंसी में भी यहाँ पे कुछ रिस्क एंड रिटर्न इंडिकेटर्स है, तो इसको मैं बार आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये इंडिकेटर्स ऐसे है कि हर एक को यूजफुल नहीं होगा, बट अगेन दिस इज वेरी प्रेशियस डेटा, ठीक है। अभी ये इंडस्ट्री है, सपोज हमने इसको क्लासिफाई किया है अंडर CMI वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोडक्ट्स इंडेक्स, राइट। तो उसका ओवरऑल अभी रिटर्न क्या है, इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स उसका ओवरऑल रिटर्न क्या है, राइट। उसके बाद निफ्टी के सामने या सेंसेक्स के सामने कितना रिटर्न है। कोस्पी इज अगेन CMI ओवरऑल शेयर प्राइस इंडेक्स, जहाँ पे हम सेंसेक्स की और निफ्टी की और आई वुड से BSE NSE की सारी कंपनीज का यहाँ पे आपका टोटल परफॉर्मेंस मिलता है, करेक्ट। तो ये एक अगेन दिस इज वेरी यूजफुल इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री इज परफॉर्मिंग बेटर या फिर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स है जैसे कि निफ्टी है या सेंसेक्स है उसका रिटर्न्स अच्छा है, राइट। तो ये कुछ आप क्विक कंपैरिजन कर सकते हैं। प्लस आपको मार्केट कैप वाइज देखना है कि ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उसके वैल्यूएशन के रेशियोज वगैरह आपको अंडरस्टैंड करने हैं, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे कंपैरिजन आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि डेली हमने जो भी फ्रीक्वेंसी लिया है उसके हिसाब से आपका डेटा आएगा,
तो आपको समझना है कि इंडेक्स का पी क्या है, इंडेक्स पीबी क्या है, राइट, उसकी लिक्विडिटी कैसी है ये पर्टिकुलर इंडेक्स की, राइट, उसका मार्केट कैप कैसा है, और कितनी कंपनीज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं इंडेक्स में, राइट। तो ऐसा आपको वैल्यूएशन के रिलेटेड कुछ रेशियोज चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको स्क्रिप्ट वाइज या फिर कंपनी वाइज आपको देखना है कि कंपनी वाइज अभी कितना रिटर्न्स दे रहे हैं, राइट, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिस आर द डिफरेंट कंपनीज, तो हर एक कंपनी का मार्केट कैप वगैरह क्या है, उसका एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, पी रेशियो वगैरह क्या है, रिटर्न्स कितना है, राइट, वो भी आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली यू वांट टू लुक एट द कंपनी वाइज सीरीज ऑफ टोटल रिटर्न्स, राइट, तो आप कंपनी वाइज देख सकते हैं कि क्या रिटर्न्स है उनके, और प्लस आपको देखना है कि ये इंडेक्स के सामने ये पर्टिकुलर कंपनी ने कितना एक्सेस रिटर्न दिया हुआ है, करेक्ट है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यस्टरडे वाज द लास्ट ट्रेडिंग डे, आज का डेटा नहीं आएगा बिकॉज देयर इज ऑन सैटरडेज स्टॉक एक्सचेंज डजंट वर्क, राइट। तो आप ऐसा क्विक कंपैरिजन कर सकते हैं यूजिंग स्टॉक रिटर्न्स, जहां पे आपको सेक्टर इंडेक्स वाइज भी मिलेगा और स्क्रिप्ट वाइज भी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। देन यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द situation in terms of capex. Now what is capex? Capex is basically capital expenditure or capacity expansion of the companies, right? इसमें आपको समझना है कि अभी इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड क्या है, whether we are getting higher investment in this industry, whether promoters are putting money in this industry or not, right? अभी जैसा कोई एंटरप्रेन्योर है वो ऐसा सोचता है कि like I want to enter in some of the vegetable oil companies, right, or in this industry, तो उसके वो क्या करेगा, एक अपना प्लांट एस्टैब्लिश करेगा। तो अभी ऐसे जो भी प्लांट्स है, जो भी कैपेसिटीज ऐड हो रही है इस इंडस्ट्री में, वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में, तो उसके आपको इन्वेस्टमेंट का एक तो ट्रेंड मिलेगा कि ओवरऑल आपको देखा सपोज स्टेट वाइज नए इन्वेस्टमेंट्स कितने आ रहे हैं, राइट। दिस इज अगेन अ प्रोप्राइटरी डेटा ऑफ CMI, right? No other can use this particular data on their own because we have created this data from our own database called as capex, right? तो भी आपको देखना है कि ओवरऑल इसका सपोज दिसंबर क्वार्टर तक का क्या यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस था, कितना इन्वेस्टमेंट आया है ये इंडस्ट्री में, राइट। तो इसमें सपोज अभी दिसंबर क्वार्टर का है तो उसमें कौन से स्टेट में इसका इतना इन्वेस्टमेंट आया है, राइट। तो आप स्टेट वाइज भी आपका जो भी, ताकि ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक स्टेट में इसका इन्वेस्टमेंट आ रहा है, राइट। जो भी स्टेट होगा, सपोज ये उत्तर प्रदेश में ये प्रोजेक्ट आया था 798.8 करोड़ का होगा, राइट, सॉरी दिस इन मिलियन। सो आपको देखना है कि ये पर्टिकुलर डेटा है कॉस्ट वाइज आपको देखना है या नंबर ऑफ काउंट्स वाइज कि कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, करेक्ट। तो उसका भी आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि कई बार कोई एक प्रोजेक्ट है काफी बड़ा है, राइट, बट कई बार ऐसा होगा कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है बट वो छोटे छोटे साइज के, सपोज यहाँ पे 9 प्रोजेक्ट्स है, राइट। तो उसका टोटल कॉस्ट देखना है तो आप कॉस्ट यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको काउंट चाहिए तो काउंट आपको यहाँ से मिल जाएगा, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स यहाँ से मिलेंगे, करेक्ट। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो लुक एट दोस चार्ट्स, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे एक इंटरेक्टिव चार्ट आपको मिल रहा है। अगर आपको ऐसा समझना है कि ये जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ वो मुझे हर एक साल के लिए नहीं चाहिए, right, but I want it for say specific years, I want to remove few years, right, I can remove those particular years or quarters data whatever you have selected, depending on your selection the charts will get modified, right। तो आपको देखना है कि ये पर्टिकुलर क्वार्टर्स में कितना डेटा आया था, राइट, तो या फिर कितना इन्वेस्टमेंट आया था, तो दिस आल्सो यू कैन गेट एन एनालिसिस, ठीक है। तो आप अभी देख सकते हैं कि कुछ क्वार्टर्स में हाईएस्ट ये पर्टिकुलर क्वार्टर था, सितंबर 18 क्वार्टर है, उसमें उड़ीसा के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया था, राइट। देन यू कैन डू सम सॉर्ट ऑफ अदर एनालिसिस लाइक परसेंटेज वाइज अगर आपको चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, करेक्ट है। तो ऐसा आप मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एन इंटरैक्टिव चार्ट्स, राइट। अगर आपको कलर चेंजेस वगैरह करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग न्यू, लाइक अर्लियर चार्ट्स फॉर सिंपल चार्ट यू कैन सिंपली डाउनलोड, बट यहाँ पे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं ये सारे चार्ट्स के अंदर, ठीक है। अभी इसके अलावा आपको समझना है फॉर एग्जांपल कि अभी कितने प्रोजेक्ट्स आउटस्टैंडिंग है, राइट।
तो यहाँ पे एक है ऑप्शन विच इज कॉल्ड एज लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये इंडस्ट्री के कौन कौन से प्लेयर्स है जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री में फर्दर एक्सपांशन कर रहे हैं। सो आई विल जस्ट मेक इट अ फुल स्क्रीन। ठीक है, सो यू कैन सी अदानी विल्मार इज देयर, जयंत एग्रो इज देयर, राइट। सो दे आर कमिंग अप विद सम कैस्टर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अभी जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसका कॉस्ट कितना है, सो यू कैन सी दिस नंबर्स आर इन रुपीस इन मिलियन, एंड so broadly it is close to like Adani Wilmar project is close to 750 crore project, right। अब ये प्रोजेक्ट कहाँ पे ला रहे हैं, so that is in हल्दिया, वेस्ट बंगाल। कौन से ग्रुप का है ये, so this is basically Adani group company, right। then type is basically substantial expansion कर रहे हैं या फिर एक कोई नया यूनिट ला रहे हैं, राइट। तो कई बार ऐसा होगा कि एग्जिस्टिंग यूनिट है उसमें भी वो फर्दर एक्सपांशन करते हैं, उसको बोलते हैं सब्सटेंशियल एक्सपांशन, एंड देन देयर इज अ न्यू यूनिट कि कोई नया यूनिट प्लान करे कोई नए एरिया में, राइट, या कोई नई जगह पे, तो उस केस में उसको बोलते हैं न्यू यूनिट। ठीक है, फिर हम हर एक प्रोजेक्ट है उसका स्टेटस मॉनिटर करते हैं कि फ्रॉम द अनाउंसमेंट टू फाइनल इम्प्लीमेंटेशन या उसका फाइनल प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तब तक हम हर एक प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हैं। अभी ये प्रोजेक्ट्स में आपको समझना है कि कौन से प्रोजेक्ट्स है ऐसे जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं, राइट। जिसकी रुचि सोया का प्रोजेक्ट है, राइट, ये जेमिनी एडिबल्स है, राइट। सो दिस आर द कंपनीज व्हिच आर एक्चुअली एक्सपांडिंग। ठीक है, सो देयर मे बी सम न्यू प्लेयर्स एज वेल इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद में आपको देखना है कि वो कौन सी प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स में डील करने वाले हैं, तो ऐसा आपको प्रोडक्ट वाइज भी यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। सो दे आर कमिंग अप विद सम एडिबल ऑयल्स, कैस्टर ऑयल, राइट, पाम एंड सोया ऑयल, करेक्ट। तो हर एक कंपनी कौन सी प्रोडक्ट्स में ये ला रही है, प्रोजेक्ट ला रही है, उसका आपको डेटा मिलेगा। कोई अपने जो पैलेट्स में ला रही है, कैटल फीड में कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, राइट। तो ऐसे मल्टीपल कोई पोल्ट्री फीड में ला रहा है प्रोजेक्ट, राइट। तो ऐसे क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो भी आप यहाँ से देख पाएंगे। देन व्हाट इज द कैपेसिटी, राइट, कितनी कैपेसिटी है या कितनी कैपेसिटी को एक्सपांड करना चाहते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो ऐसा आपको कैपेसिटी वाइज भी डेटा मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो सी द यूनिट, यहाँ पे है 528,000 टन का ये प्रोजेक्ट है, एंड दिस आर 600 टन्स का प्रोजेक्ट है। ठीक है, एंड इफ दे हैव गिवन कि हम टेंटेटिवली ये प्रोजेक्ट्स कब तक कंप्लीट करेंगे, राइट। सपोज ये लोहिया एडिबल ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसका कोई प्रोजेक्ट है, सो दे आर एक्सपेक्टिंग दैट प्रोजेक्ट विल गेट ओवर बाय 31 मार्च 2022, राइट। तो ऐसा अगर कोई कंपनी ने दिया एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट, तो हम यहाँ पे उसको इंक्लूड करते हैं। अदरवाइज CMI खुद भी कुछ एस्टिमेट्स क्रिएट करती है। अगर कोई हमको प्रोजेक्ट लग रहा है कि वी एक्चुअली कॉल ईच एंड एवरी कंपनी, वी अंडरस्टैंड कि उनका अभी क्वार्टरली स्टेटस क्या है। So if they are saying, yeah, by this point of time we should be done with this project, there should be let's say the implementation will be completed, right। तो उसके हिसाब से हम CMI भी कुछ एस्टिमेट्स देती है, जो आप अगर कोई कंपनी का है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, अभी कोई एस्टिमेट CMI ने नहीं दिया है। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो यूज ऑल दिस डेटा, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि अभी क्या हो रहा है, ये इंडस्ट्री में फ्यूचर कैसा लग रहा है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, right। So these are the list of all the outstanding projects, or then there is one more project related detail which is called as distribution of projects। ये इंडिया के मैप पे अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कहाँ पे क्लासिफाइड है, बट आई थिंक दिस विल वर्क ऑन फ्लैश प्लेयर। अभी फ्लैश एक्चुअली बंद हो गया तो उसकी वजह से वो रन नहीं हो पाएगा। ठीक है, so these are few of the options which are available in capex tab, right। So we have broadly understood company's performance, industry's performance, quarterly performance. We understood the stocks and the returns part. We have understood the total investments which are going to come, right। आपको देखना है कि कोई प्रमोटर है जिसने इन्वेस्टमेंट का प्लान ड्रॉप कर दिया है, राइट, या किसने इन्वेस्टमेंट जो ये इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया था उसने वो कंप्लीट कर दिया है, वो प्लान या प्रोजेक्ट उसका कंप्लीट हो गया है। तो वो केस में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के हर एक इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देन कम्स मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर में अगर आपको समझना है कि फॉर एग्जांपल इसमें वनस्पति ऑयल में क्या क्या कंपनीज है, उसका मार्केट शेयर क्या है, वेजिटेबल ऑयल्स में कौन कौन सी कंपनीज है, सोया ऑयल्स में, सोया प्रोडक्ट्स में, एनिमल फीड्स में कौन सी कंपनीज है, राइट। सो
you can select appropriate indicator. For example, I want to look at the companies which are there in Vanaspati, right? And I want to look at market share of those companies. ठीक है, so you can select this particular indicator. अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये अजंता सोया है, रुचि सोया है, which are into वनस्पति ऑयल, करेक्ट. तो ऐसा हर एक कंपनी वाइज आपको मार्केट शेयर समझना है कि आउट ऑफ टोटल प्लेयर्स किसके पास ज्यादा मार्केट शेयर है, राइट. तो ऐसा हर एक कंपनी वाइज आप मार्केट शेयर यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कंपनीज का यहाँ पे टोटल भी मिल जाएगा और उसके बाद में आपको समझना है कि एक इंडस्ट्री में अभी कॉम्पिटिटिवनेस कितना है, उसके लिए एक इंडेक्स होता है दैट इज कॉल्ड एज हर्पेंडर इंडेक्स, राइट. वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं. दोस्त हु आर इन कोर रिसर्च दे वुड अंडरस्टैंड दिस इन मच डिटेल, राइट. तो आप ऐसा मार्केट शेयर हर एक कंपनी का देख सकते हैं. देन यू वांट टू अंडरस्टैंड मार्केट शेयर ऑफ द कंपनीज इन से वेजिटेबल ऑयल्स. ठीक है, जैसे हम अदानी विल्मार देख रहे थे या दूसरे जो भी प्लेयर्स हैं विच आर इनटू एडिबल ऑयल्स, राइट. तो उसका हर एक का प्लेयर का परफॉर्मेंस क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका यहाँ पे मार्केट शेयर. सपोज अदानी विल्मार इज होल्डिंग क्लोज टू 11% मार्केट शेयर इन वेजिटेबल ऑयल एंड देन कम्स रुचि सोया एंड सम अदर कंपनीज. ठीक है, मेरिको इज क्लोज टू 9th रैंक in terms of the market share in edible oils or vegetable oils, right? Yeah, NK Produce. So we know these companies well. So I'm just trying to correlate, right? So these are things like you can get market share based on the products they are producing, the products in which they are dealing, right? So या products में जाएंगे तो थोड़ी अलग कंपनी हो सकती है, animal feeds में कुछ अलग कंपनीज हो सकती है, right? So this is market share. Then this is the most important tip in terms of understanding what is the demand and supply cycle of any selected industry. ठीक है, अभी सपोज आपको समझना है कि हर एक प्लेयर्स का या स्टेट वाइज आपको देखना है कि कुछ डिमांड एंड सप्लाई का साइकिल क्या है, प्राइसेस देखना है आपको, वैरायटी वाइज प्रोडक्शन वगैरह देखना है, राइट. तो आप यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी का डेटा है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट करता हूँ डिमांड एंड सप्लाई, एनुअल, quarterly and monthly. ये तीन फ्रीक्वेंसी है. लेट मी सिलेक्ट द क्लोजेस्ट फ्रीक्वेंसी व्हिच इज मंथली. ठीक है, तो अभी सपोज इसका इंपोर्ट कितना हो रहा है, राइट. जैसे कि एडिबल ऑयल से हम इंडिया में फ्रॉम 16 to 21 में हमने कितना इंपोर्ट किया है, राइट. तो वी कैन सी लाइक देयर वाज गुड इंपोर्ट इन 21 अप्रैल, राइट. एंड दिस इज एज पर व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रेस एसोसिएशन, राइट. उन्हें कुछ नंबर्स दिए, उसके हिसाब से कितने हैं. सो दिस इज गवर्नमेंट नंबर एंड दिस इज एसोसिएशन नंबर. देन यू वांट टू सी क्यूमुलेटिव नंबर्स कि सपोज 21 में या 20 में नवंबर टू अप्रैल तक कितना इंपोर्ट हुआ था, या यहाँ पे एसईए ने कितना दिया है, राइट. फ्रॉम नवंबर टू फरवरी कितना इंपोर्ट हुआ है. तो जैसा वो जो फ्रीक्वेंसी में जो डेटा अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको एनालिसिस के लिए मिल जाएगा. Now we have selected monthly frequency. तो आप इधर YOY चेंज देख सकते हैं कि लास्ट ईयर अप्रैल 20 की कंपैरिजन में अप्रैल 21 में कितना इंपोर्ट बढ़ा है या कम हुआ है, राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोज टू 19% इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है. दिस इज YOY, ईयर ऑन ईयर परसेंटेज चेंज. एंड देन कम्स MOM परसेंटेज चेंज व्हिच इज मंथ ऑन मंथ व्हाट इज द प्रोग्रेस और व्हाट इज द से परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 15% जितना इंपोर्ट बढ़ा है एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ. ठीक है, सो दिस इज देयर इन डिमांड एंड सप्लाई. द फर्स्ट पार्ट इज यू विल गेट ऑल दिस डेटा रिलेटेड टू व्हाट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. राइट नाउ यू वांट टू लुक एट सो दिस विल इंक्लूड 4 broader things: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. राइट नाउ यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है कि प्रोडक्शन वेराइटी वाइज जो ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा दिया है, तो एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हो रहा है एडिबल ऑयल का, राइट. दिस इज अगेन अ गवर्नमेंट नंबर. तो अभी आपको देखना है कि मंथली प्रोडक्शन देखते हैं. ठीक है, सो हर एक इंडस्ट्री का आपको प्रोडक्शन मिल जाएगा, कंजम्पशन का क्या सिचुएशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो सपोज लेट अस लुक एट कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, राइट, और एडिबल ऑयल्स, करेक्ट. तो उसमें सपोज वनस्पति का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, right. ये टाइम सीरीज, दिस इज अ वेरी प्रेशियस डेटा,
right? Those who are in research, they will really appreciate this. So वनस्पति का कितना प्रोडक्शन है, टोटल कितना इसका प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, उसमें ग्राउंडनट ऑयल, सोया ऑयल, मस्टर्ड, कॉटन सीड, कैस्टर, राइट, ऑयल केक्स का कितना प्रोडक्शन है, ऐसा हर एक वेराइटी का आपको इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. Similarly, we have seen year-on-year change and month-on-month change. अगर देखना है कि प्रोडक्शन कितना बड़ा है इस कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ, तो वो डेटा भी आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे. उसके बाद में आपको समझना है, so we have seen this is a CSO data, right? Again, government data. Then you would be interested in prices, right? जैसा हम बोल रहे कि पाम ऑयल वगैरह है जो हम काफी इंपोर्ट करते हैं, राइट? तो उसका प्राइसेस क्या है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बेस पे, करेक्ट? तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे प्राइस सिलेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल, आई वांट मंथली प्राइसेस. ठीक है, तो मंथली प्राइस आपको देखने की हर एक कमोडिटी का या हर एक वेराइटी का क्या प्राइस है, वनस्पति का, सोयाबीन का प्राइसेस क्या है, राइट? Now as we all know, like groundnut oil and other oil prices are increasing like anything, right? तो आपको देखना है कि कैसे अभी प्राइसेस में क्या चेंजेस हो रहा है और उसका आपको अगर कंपैरिजन करना है. सपोज ये कुछ प्राइस अगर आपको लास्ट ईयर की कंपैरिजन आपको करनी है, राइट? सो दिस वाज USD पर टन in terms of international prices. Similarly, you can also get domestic prices, Indian prices as well. ठीक है, क्रूड पाम ऑयल का उसने जब तक का डेटा रिलीज किया है तब तक का यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा. ठीक है, देन यू वांट टू सी क्रूड प्राइसेस, राइट? पाम ऑयल क्रूड प्राइसेस, तो कंडला में उसका रुपीस पर 10 kg का क्या प्राइस है, राइट? तो वो डेटा भी यहाँ पे डोमेस्टिक प्राइसेस भी अवेलेबल है और इंटरनेशनल प्राइसेस भी इसमें आपको मिल जाएंगे. ठीक है, सो दिस आर द वेरियस मार्केट्स, लाइक मुंबई है, कोची है, राइट? तो अलग अलग मार्केट्स है. सपोज कोकोनट ऑयल है, सो वी गेट मोर ऑफ कोकोनट ऑयल फ्रॉम द साउथ पार्ट, राइट? सो कोकोनट प्रोडक्शन इज हायर देयर. तो ऐसे अलग पार्ट्स में कहाँ पे क्या प्राइसेस चल रहा है, तो उसका भी आपको यहाँ पे एनालिसिस प्लस डेटा पूरा मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस आर द प्राइसेस पार्ट. उसके अलावा जो हमारा इन्फ्लेशन का डेटा रहता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, राइट? उसमें भी अलग अलग बेस ईयर का आपको डेटा देखना है. सपोज बेस ईयर 11-12 का हमको समझना है कि अभी क्या सिचुएशन है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि WPI ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना प्राइसेस बढ़ रहा है, राइट? सो दिस इज आल्सो अ गुड इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड और टेक अ प्रॉक्सी कि भाई एक्चुअली इतना प्राइसेस हर एक टाइप के ऑयल में बढ़ रहा है. ठीक है, सो दिस आर मैन्युफैक्चर ऑफ एनिमल प्रिपेयर्ड एनिमल फीड्स. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग डेटा पॉइंट्स है जो आप यूज कर सकते हैं फॉर योर स्टडी, फॉर योर टीचिंग, फॉर योर रिसर्च, राइट? एंड स्पेशली फॉर योर प्रोजेक्ट, राइट? सो दिस आर देयर इन डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन, प्राइसेस. You want to understand what are the imports or exports, right? So yesterday also we have seen in commodities कि हर एक commodity वाइज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट क्या हो रहा है, कितना हो रहा है. ठीक है, तो वो सिमिलर डेटा है, बट यहाँ पे हमने इंडस्ट्री वाइज क्लासिफिकेशन दिया है. अभी ऐसा होगा कि शायद कमोडिटीज डेटाबेस है उसके अंदर में हमने डेयरी प्रोडक्ट्स करके कोई इंडस्ट्री नहीं दिया है, राइट? बट कमोडिटीज में आपको शायद ऐसा मिल सकता है कि जैसे व्हीट है उसका एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, बिकॉज दिस आर द एक्चुअली एग्रीकल्चर कमोडिटीज, करेक्ट? सो अगर आपको देखना है कि अभी यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या क्या दिया है, तो फॉर एग्जांपल जैसा हम कल डिस्कस कर रहे थे, एंड टुडे आल्सो आई विल कवर सम पार्ट ऑफ इट, कि प्रिंसिपल कमोडिटीज पीसी क्लासिफिकेशन एंड आईटीसी क्लासिफिकेशन, ये दो क्लासिफिकेशंस में डेटा मिलता है फ्रॉम DGCINS, राइट? तो उसमें अभी आपको चाहिए कि अभी कितना एक्चुअल में इंपोर्ट हो रहा है, राइट? तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं, एनुअल, क्वार्टरली, मंथली, आपको जो चाहिए वो. ठीक है, तो मंथली हम देखते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है, क्या इसके अंदर सिनेरियो है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक बढ़ गया, परसेंटेज शेयरिंग टोटल, तो टोटल इंपोर्ट हो रहा है, उसमें से कितना इंपोर्ट हम कहाँ से, कौन सी कंट्री से कर रहे हैं, राइट? सो यू कैन सी
Now the best part about this is आपको यहाँ पे डायरेक्टली हमने सॉर्टिंग करके दिया है कि सपोज वर्ल्ड से हम टोटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं दिस मच, राइट, लाइक 95,888, यहाँ पे हमने नंबर दिया इन रुपीज इन मिलियन, राइट। तो अभी इसमें से हाईएस्ट कौन सी कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंडोनेशिया से हम हाईएस्ट अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज क्लोज टू 28,880 million rupees, right? And then second comes Malaysia and some other countries. So this is automatically sorted data, right? You will quickly come to know कि हम कौन सी कंट्री से मैक्सिमम इंपोर्ट्स अभी कर रहे हैं, राइट। अभी उसके बाद में आपको so this is what like all the other countries also if you want to look at, or maybe you want to look at in terms of USD, ठीक है। तो आपको USD में भी इसका तो अलग एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से भी आपको यहाँ पे करेंसी के हिसाब से भी आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको चाहिए कि फॉर एग्जांपल मुझे सो आई हैव सीन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड स्टिल आई वांट टू लुक एट द परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, राइट। तो क्वांटिटी वाइज कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट, उसका भी आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा सारा, ठीक है। So these are the numbers, these are the actual imports from various countries and from the world. We are looking at percentage share in total quantity wise हम जो import कर रहे हैं उसमें से कौन सी कंट्री में से हम मैक्सिमम या कितना परसेंटेज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। So close to 31% is imported from Indonesia and then Malaysia and some other countries, correct. So this is a good analysis for the researchers, for those who want to understand what is the import situation, right. We have one more database which we will cover today, which is called as TradeDX. In TradeDX, we'll be covering the HS code wise search, right. So if you know some specific HS code, that search is also possible. You can select a specific commodity and then you can also extract the data of those commodities, right. So so imports we have seen these are the two simple classifications, principal commodities and ITC, just two are there, right. And then you want to look at some data. So suppose as I mentioned there is an association of solvent extractors, so उसके हिसाब से कितना edible oil का import हुआ है, right. तो वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। So these are various sources, अलग sources से हमने basically data collect किया है, तो उसके हिसाब से कितना actual में import हुआ in terms of various variety, right? तो वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। अभी इसके अलावा, so what we have done now is we have selected an industry which is vegetable oils and products. We have seen almost all the tabs except two, right? Surveys में यहाँ पे आपको मिलेगा annual survey of industries का data, ठीक है। कि सपोज आपको देखना है कि मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल एंड ऑयल एनिमल ऑयल्स एंड फैट्स उसका कितना प्रोडक्शन हुआ है, करेक्ट है। सो देयर आर वेरियस डेटा पॉइंट्स लाइक नंबर ऑफ फैक्ट्रीज कितनी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, वर्कर्स कितने हैं, उसमें वेजेस टू वर्कर्स कितने हैं, राइट, प्रोडक्टिव कैपिटल कितना है, टोटल इनपुट कितना है, मटेरियल कितना कंज्यूम किया है, राइट, उसमें प्रॉफिट कितना उनको मिला है उसमें से, करेक्ट। सो दिस इज अगेन अ गवर्नमेंट डेटा, ASI एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है, तो उसका उसने जब तक का डेटा दिया 1890 तक उन्होंने रिलीज किया है, तो तब तक का आपको यहाँ से डेटा मिल जाएगा, करेक्ट है। देन so these are survey, this tab may be available for many of the industries जहाँ पे इंडस्ट्री का गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन जो इस हिसाब से किया है, if it matches we will put it a tab called as survey. And the last tab is forecast. Forecast में आपको क्या डेटा मिलेगा, जैसा हम कल डिस्कस कर रहे थे, इधर आर वेरियस डेटा पॉइंट्स कि जहाँ पे आपको इंडस्ट्री का फोरकास्ट भी चाहिए होगा, या टोटल प्रोडक्शन कितना बढ़ने वाला है, कंजम्पशन कितना बढ़ने वाला है, राइट। तो वहाँ पे उस केस में आप यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई में जाके, फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे एनुअल सिलेक्ट किया है, सो एनुअली अगर आपको देखना है कि इसका अभी प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा, कौन से टाइप का ऑयल का प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा, करेक्ट है। सो सपोज अभी दिस इज ऑल पार्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, अगर उसका फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट ऑयल का
अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, राइट, तो इट मींस देयर आर चांसेस दैट द प्राइसेस मे डिक्रीज, राइट, बिकॉज देयर इज अ गुड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट. अगेन इफ यू आर एक्सपोर्टिंग तो उसका भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट उसका हो सकता है. So you can look at those numbers which are given in red are the numbers which are forecasted from CMI, right? So we have specific data available for forecast for various indicators here in the industry outlook database, right? Now you want to look at some percentage change कि production कितना बढ़ेगा, percentage share कितना, कौन से type के oil में ज़्यादा production रहेगा, right? तो इसमें आप यहाँ पे परसेंटेज शेयर टेप भी देख सकते हैं. करेक्ट. सो दिस आर एनुअल नंबर्स. अगेन यू वांट टू लुक एट कि हम इंपोर्ट्स कितना बढ़ेगा या प्राइसेस कितने बढ़ेंगे. लेट्स से क्वार्टरली हमको नंबर देखना है तो आप यहाँ पे क्वार्टरली भी डेटा देख पाएंगे. ठीक है. कि अभी सपोज हम जो पाम ऑयल है, राइट, तो उसका प्राइसेस अभी कितना रहेगा या कितना बढ़ेगा, कम होगा. सो we are estimating that it will go down in next few quarters, right? तो यहाँ पे जुलाई है, अक्टूबर है, अभी next year में शायद उसका prices कम हो सकता है. So these are the estimated or forecasted numbers which you can use for your research purpose. Please remember कि जब भी आप ये डेटा Excel में डाउनलोड कर रहे हैं, उस केस में ये डेटा डेक में आ जाएगा पूरा, बिकॉज वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं कि हम डायरेक्टली उसको Excel में भी कलर के साथ में दे सकें. तो अगर आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं इसके बेस पे, प्लीज मार्क दिस नंबर्स एज रेड और हाईलाइट दिस नंबर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ये जो डाउनलोड किया था वो फोरकास्टेड नंबर था, राइट. एंड देन द ब्लैक जो नंबर्स है, ब्लैक में जो दिख रहे फिगर्स, वो सारे हमारे एक्चुअल नंबर्स जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी ने या रिस्पेक्टिव एसोसिएशन ने दिए हैं, राइट, या सोर्सेज ने दिए हैं. ठीक है. So this is there in industry outlook, right? So there are good number of data, good number of time series, good number of say analysis which is available, right? जैसे आप कोई इंडस्ट्री चेंज करने, कई बार ऐसा होगा कि कुछ डेटा कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री का अवेलेबल है, कोई दूसरी इंडस्ट्री में कुछ एडिशनल डेटा भी अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट सिलेक्ट डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, या फिर मैं प्रोसेस फूड्स भी ले सकता हूँ, राइट. तो उसका आपको डायरेक्टली इमीडिएट कुछ डेटा यूजफुल हो सकता है. ठीक है. सो जैसे कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई में हम आएंगे इन डेयरी प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे आपको मिल्क का स्टेट वाइज प्रोडक्शन कितना हो रहा है, राइट, उसका डेटा आपको मिल जाएगा, राइट. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे प्रोसेस फूड्स लेंगे और कोई इंडस्ट्री आप सिलेक्ट करेंगे तो उसपे डिमांड एंड सप्लाई में थोड़ा डेटा चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर पर्टिकुलर डेटा रिक्वायरमेंट या फिर डेटा अवेलेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे कुछ डेटा चेंज हो सकता है. सपोज मैं यहाँ पे शुगर सिलेक्ट करूंगा, सो यू मे गेट सम मोर इंडिकेटर्स. ठीक है. कि जैसे कि उसका जो शुगर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है उसने क्या डेटा कुछ रिलीज किया है, राइट. तो या फिर स्टेट वाइज प्रोडक्शन क्या है शुगर का, राइट, उसके प्राइसेस जो अलग अलग उसके सोर्सेज है वहां से हमने जो कलेक्ट किया है. तो ऐसे डिफरेंट सोर्सेज का डेटा आप यूज कर सकते हैं एट अ सिंगल प्लेस, राइट. वी ट्राई टू इंक्लूड व्हाटएवर सोर्सेज आर अवेलेबल in let's say whatever form. So अगर कोई सोर्स ने दिया है कि वो पीडीएफ में है या कोई सोर्स ने दूसरा हार्ड कॉपी दे रहा है, then also our team works on that. We get that particular data and we standardize. तो अभी आपको यहाँ पे data extraction is very easy because हमने एक standard format ही रखा है. There is no second format, right? So you can quickly compare. Even similarly for states of India, for economic outlook database, we have had given the standard format, which I'll be covering in next few minutes. Okay, so I think we are on right track. We are on right time. I think I have covered one database, which is Industry Outlook, and you can subscribe to some email alerts. ठीक है. जैसा हम कल डिस्कस कर रहे थे कि कमोडिटीज में भी अगर आपको कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए, राइट, तो उसके न्यूज रहते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वी हैव गिवन सम टाइडिंग्स, सम इनसाइट्स, आउटलुक एंड ओवरव्यू, राइट. जैसा हम यहाँ पे ओवरव्यू के एक टेब में हमने देखा था कि उसका पूरा ओवरव्यू दिया है कि भाई क्या है अभी ये इंडस्ट्री में क्या हो रहा है. सिमिलरली आपको सब्सक्राइब करना है कि आपको स्पेसिफिक इंडस्ट्री का कुछ न्यूज चाहिए, राइट. अभी मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स का सिलेक्ट किया हुआ है कि उसका कुछ भी ओवरव्यू आता है, सो आई विल गेट एन ईमेल अलर्ट, राइट. सो यहाँ पे दिया है कि वंस यू चेक द बॉक्स यू विल रिसीव एन ईमेल अलर्ट. तो आप यहाँ पे एक
या मल्टीपल बॉक्सेस चेक कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए या सारी इंडस्ट्री के लिए भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट. सो एट द एंड ऑफ डे यू विल गेट अपडेट that what has happened to this industry, or maybe if there is some change in terms of say production or something else, some numbers are released, right. वो केस में आपको उसका पूरा अपडेट यहाँ पे at the end of day आपको मिल जाएगा. if you are subscribing to tidings, overview, outlook और insights हम जब भी रिलीज करते हैं उसके हिसाब से आपको उसका भी एक ईमेल आ जाएगा कि now we have released the outlook for this industry, so you can just go and check, right. And you will also get a link for going to that outlook or overview of any selected industry. Okay. So this mail address also you can subscribe. One more thing, you can use a very good feature called as Excel Edit. अभी Excel Edit क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिसर्चर्स है, राइट, they work on some fast frequency data. तो उसमें उनको चाहिए कि जैसे कि without even going to this industry outlook page, right, I want to download the data in a simple Excel file, right. I don't want to do anything else, but simply जब भी उसका डेटा आता है मेरे Excel में वो डेटा अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है. कई बार मंथली फ्रीक्वेंसी डेटा है या कुछ डेटा होगा जो प्राइसेस वगैरह कुछ है तो हमको वो डेली बेस पे भी मिल रही होगी, राइट. तो ऐसा जब भी वो प्राइस आता है मेरे Excel में वो अपडेट हो जाना चाहिए. तो उसके लिए you can use this feature called as Excel Edit. We can help you in understanding what is Excel Edit. We can help you in setting up this Excel Edit, right. I and my team member Parth, we are there, so we can help you so that your research will be very quick, right. आपको देखना नहीं पड़ेगा कि भाई अभी कुछ डेटा इसमें आया है या नहीं आया है, राइट. आपको ये साइट में भी आने का बाद में जरूरत नहीं पड़ेगा, करेक्ट. सो ऐसा हम एक एडिट सेटअप कर सकते हैं आपके लिए इन केस इफ यू वांट. कई बार ऐसा होगा कि आपको कुछ रिपोर्ट्स है उसको आपको एज इन फेवरेट रिपोर्ट्स आपको सेट करना है, राइट. तो आप कोई भी रिपोर्ट सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में आप यहाँ पे एक ऑप्शन है विच इज कॉल्ड एज से फॉर एग्जांपल आई वाज लुकिंग एट सम इंडस्ट्री ग्रोथ रिपोर्ट, ठीक है. अभी ये रिपोर्ट के अंदर मुझे एक ऑप्शन मिलेगा कि आई वांट टू सेव दिस रिपोर्ट एज माय फेवरेट रिपोर्ट, राइट. सो दैट ऑप्शन इज हियर विच इज कॉल्ड एज ऐड टू करंट रिपोर्ट सेट. उसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है. तो उस आपका ये रिपोर्ट यहाँ पे जो हमारा रिपोर्ट या फेवरेट सेट्स है, राइट, उसमें सेव हो जाएगा. सो से फॉर एग्जांपल आई वांट टू अंडरस्टैंड नाउ कि भाई क्या है सिचुएशन इसमें. अभी जैसे कि मैं ये रेगुलर अपडेट्स मेरे पास यहाँ पे आते रहेंगे, ठीक है. कुछ डेटा अपडेट होगा तो भी मुझे ये एक ही रिपोर्ट पे क्लिक करना है. सो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा रिपोर्ट सेट में, ठीक है. I have selected multiples, but whatever you have saved as a favorite report, right? Those reports will be available here, correct? So you can set some reports as your favorite reports, right? Suppose मैंने यहाँ पे ये report दिया था. This is my favorite report now. I can simply click and go to that report. So maybe कई बार ऐसा होगा हर एक इंडिकेटर हर एक डेटा पॉइंट्स आपके लिए काम के नहीं, बट आपके जो फेवरेट रिपोर्ट्स है वो आप सेट करके यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है. So I hope you found it useful, and similarly there is a SIG clarifications options. Those who have missed it yesterday, I would like to inform that there is a good online support which is also available. For example, you have some queries like why a specific year data is not available. For example, we are looking at some vegetable oil industry, right? उसमें आपको कोई इंडिकेटर पे आपको ऐसा कि इसका ये डेटा क्यों अवेलेबल नहीं है, राइट, या इसका डेटा कब आएगा या कौन सा उसका सोर्स है, ऐसा कुछ भी क्वेरी आपका है, राइट. कई बार you have to mention from which source we have captured the data, correct. वो केस में आप क्या कर सकते हैं, you can just select the industry, just write your message and post the query, ठीक है. So you will get revert from our team usually in one day except Saturday Sunday. So we have a holiday on Saturday and Sunday at our head office, right. So you can post your queries. You can post as many queries you want to post, right. There's no limitation in terms of number of queries. You want some clarification on data which is presented in Industry Outlook, some articles we have presented in Industry Outlook, right. So whatever is there in your mind, you can post it here, right. And anyway, like this is more of an online support, but offline support is always there. You can contact us through library,
You can contact us through this particular project head, Pundir sir. Also, you can contact Lad sir, right? Or any other faculty. I think I know many of the faculties in management, especially. So you can reach us. You can contact us in terms of some clarity required in terms of data, right? So I think I'm done with industry output part. I'll pause for a minute to take up the questions. Shraddha ma'am, if you can help me with understanding that if there is there are some questions from the team members. I think you're not audible, ma'am. Yeah, ma'am, any questions from the students or any team member? Okay. Sir. Okay. Yes, sir. There is one message I came to know from the YouTube. Can you again repeat the registration process for the AU student or faculty again? Yeah, sure, sir. Sure, sir. Please repeat again. Sure, sir. Definitely. Fine. Okay. Okay, so you can post your queries. Sir, just to check, am I visible, like my video is on or not? I'm just trying to check. It is a video we can easily see. There is no issue. Okay. Can you please? Sure. So for those who have not attended, or maybe those who are keen to understand, you can go to any of the sites. For example, if you go to Industry Outlook, I'll just log out from here. Once you go to any site, right, you will get an option called as register, right? And once you click on register, then you will get options like the username, your email ID, confirm email ID, right? So in username, you cannot use space. So for example, my name is Prashant. So I will use the username like Prashant184 or whatever I want to use, but don't give spaces. You can use underscore in case if you want. You can use your particular email ID. Ideally, it should be AU ID, so that we can come to know that you are the registered student or the user from another agriculture university, or maybe you can also use Gmail ID. And then you need to confirm the email ID. So whatever email ID is given here, you need to confirm. उसके बाद में आपको टाइटल देना है यहाँ पे, मिस्टर, मिस, मिसिस, डॉक्टर, जो भी है आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं. आपका नाम एंटर कीजिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका सरनेम एंटर कीजिए. Then you want some word verification, right? So suppose अभी यहाँ पे कुछ वर्ड दिया है 23548, तो ये आपको एक बार वेरीफाई करना है. email ID. Yeah, email ID is here. You have to enter it here. ठीक है. दूसरा है कि आपको मैंडेटरीली यहाँ पे ऑप्शनल डिटेल्स फिलअप करना है, ताकि क्या होता है कि कई बार अभी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या आपके प्रोजेक्ट्स में काफी सारे लोग होंगे, काफी सारे रिसर्चर्स होंगे, राइट? तो आपका क्वेरी आएगा, यूजर नेम से वैसे हमको पता चल जाएगा या फिर यहाँ ईमेल आईडी से पता चलेगा, बट अगर आपकी कुछ क्वेरीज आप जब पोस्ट कर रहे हो सीक क्लैरिफिकेशन में, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शेयर कीजिए, आपका डेजिग्नेशन शेयर कीजिए, राइट? आपका डेजिग्नेशन मींस इन केस ऑफ स्टूडेंट्स यू कैन यूज स्टूडेंट एज अ डेजिग्नेशन, and in company or institution you can write Anand Agriculture University, right? Or maybe you can also write your specific college name if you want to use it, department if you want to write, and then enter the city name, that is Anand, then just submit. ठीक है. आप एक बार जैसे इसको सबमिट करेंगे, उसके बाद में आपको एक पासवर्ड आएगा along with your username. आपने जो यूजरनेम रखा है उसके साथ में एक पासवर्ड आपका आएगा, और वो पासवर्ड और यूजरनेम के को यूज करके आप यहाँ पे होम पेज पे जाके उसको फिर से एक्सेस कर पाएंगे. कोई भी आप कोई भी साइट ले लेंगे, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना है.
हर एक डेटाबेस के लिए अलग रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है, right? So please register yourself and you will get the password. You can use this database. Now again, like I think there were many faculty members who were not available yesterday, or maybe many students who were not available yesterday. अगर आपको ये जो database है, if you are a AU student, right, you can ask to library to start outside campus access. जैसा कि अभी क्या है कि because of this pandemic and the distancing norms, we have started giving access outside campus as well, right? And again, this is a IP based subscription. तो IP में तो आपका चलेगा ही, अगर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में है, कैंपस में है, वो केस में आपका कैंपस में तो चलेगा ही ये डेटाबेस. बट इन एनी केस इफ यू वांट इट आउटसाइड कैंपस एक्सेस, राइट, तो आप एक बार लाइब्रेरी में कांटेक्ट कर सकते हैं, घोड़ासर सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आपके स्पेसिफिकली जो डिपार्टमेंट हेड है, राइट, या आपका कोई कोऑर्डिनेटर है, तो वो केस में आप पहले उनको एक बार रिक्वेस्ट कीजिए, एक का सबका ईमेल आईडी एक साथ में ले लीजिए, एंड देन यू कांटेक्ट लाइब्रेरी सो दैट फॉर देम आल्सो इट इज इजी टू स्टार्ट द एक्सेस. वो एक कंबाइंड लिस्ट हमको भेज देंगे और उसके बाद में उसका हम एक्सेस स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो आई रिकमेंड कि आप स्ट्रांगली ऐसे कंबाइंड ही एक लिस्ट भेजिए, जिससे कि लाइब्रेरी का भी थोड़ा काम इजी हो जाए, राइट, and quickly you can get the access for all those users. Okay, so I hope you understood the registration process. Anything else, sir? Any other question? Yeah, Lars sir. Actually, in the morning, some of them has tried, so they have again requested. That's why I repeat the same questions. Okay. That's why I just get the message from a chat box. That's why. Oh, okay. And this is for all the participants. Yesterday videos are already available on YouTube. You can check it out again. You can get the easy way. And this video is available, you can say, for a lifetime. So whenever if you are facing any problem regarding this database, you can go through that videos in NHEP. You can subscribe and you can get the full details. Over to you, Sardar. Sir, there is one more question. Is it a free to access database? I don't know. I got this question because this is a very tough question to answer. I don't know who is the user. If he is from Anand Agriculture University, yes, it is available to you, right? But the only condition is you have to ask library to start the outside campus access, right? These are not free databases actually. Any of the CMI database is not a free database. These are the subscription based databases. So your project requirement, for your library requirements, they have subscribed this database, right? So if you are a student, you are a registered student or a researcher or a faculty member, you absolutely can get access of this database, right? But those, I don't know, sir, there will be several participants from outside AU as well, right? Okay, sir? Yeah, so in that case, I don't know who has asked the question, but I just wanted. Yeah, actually, it is come on the chat box. That's why that person has pasted. No problem, sir. So, okay, so I think there are no more questions, so I can move ahead with 2 or 3 more databases which we want to cover. No. Okay, fine. So now you want to understand. So this is what I think broadly I have covered each and every part of industry outlook. And then you want to understand which are the other databases which we will be covering now, right? So there is one more database. I'm again giving you a brief. I don't want to say show only data part, but I just want to show the utility as well. What is the specialty? Why the databases can be useful to you? That is what something I would like to cover, and then I want to go ahead with the actual data part. Right. So now suppose you want to understand what is the each and every state's performance, right? How state is performing, what is the performance of a district. For example, you want to understand what is the commodities export from a given state. हमने जो इंडस्ट्री आउटलुक में देखा था उसमें क्या था डेटा कि वहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्री लेवल पे या एग्रीगेट लेवल इंडिया लेवल पे कितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसका डेटा उसके अंदर अवेलेबल था. ठीक है, बट अगर आपको चाहिए स्पेसिफिकली कि मुझे स्टेट वाइज एक्सपोर्ट्स कितना हो रहा है, जो भी अगेन DGCNS का ही डेटा है,
and it is also very precious data, right? It is not available everywhere. So वो data अगर आपको extract करना है, so उसके लिए मैं आपको एक site लिखवा देता हूँ. Please note down the sites for all these databases which we are discussing. सबसे पहले क्या होगा कि आपको एक ही चीज है कि कोई भी हमारा डेटाबेस है उसका आपको नाम याद रखना है. Then domain is .cmi.com. ठीक है. So suppose if it is industry outlook, so you need to write industryoutlook.cmi.com. If it is some other database, then in that case you can write suppose you want to access states of India, so you need to enter statesofindia.cmi.com. ठीक है. तो अभी स्टेट्स ऑफ इंडिया में हम क्या कवर करते हैं, क्या डेटा उसके अंदर अवेलेबल है. So there is close to 139 million time series data which is available, right? You can literally select any state, you can select any district, and you can do inter-district comparison, you can do interstate comparison, right? Or maybe you want to understand that what is happening with the states which got separated. कई बार ऐसा होता है कि पहले कोई एक स्टेट था, राइट? उसमें से कोई एक दूसरा स्टेट उसमें से सेपरेट हुआ है, राइट? या फिर कोई एक डिस्ट्रिक्ट था, उसमें से दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेपरेट हुआ है, राइट? तो उसका सेपरेशन के पहले का और बाद का परफॉर्मेंस अगर आपको समझना है तो वो केस में आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर डेटाबेस विच इज कॉल्ड एज स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. अभी the process remains the same. You have to use your username and password. If you are there in campus, you can directly go to this particular database. ठीक है. So let me log in with this database. I hope you are enjoying the session, and please feel free to ask any of your queries. Right? Please write it in chat box so that Shraddha ma'am or some other team members can just check. Yes, sir. Okay. So yeah. So now we are in this particular database called States of India. ये database के अंदर I think I have explained this regional garland yesterday, but still I'll take a minute to explain it again. हमने क्या किया है? We have prepared a garland, right? Like all these western states are here, eastern states are here, all the northern states are here, and southern states are here. अभी ये आपके लिए क्यों जरूरी है? ताकि आपको देखना है कि कई बार आपको स्टेट वाइज परफॉर्मेंस या इंटरस्टेट कंपैरिजन कर रहे हैं, वहां से डायरेक्टली नेविगेट करना है कोई स्पेसिफिक स्टेट के टाइम सीरीज पे. तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अभी ये स्टेट का कहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन किया है. ठीक है. या फिर आपको यहाँ पे स्टेट में एक ड्रॉप डाउन मेनू भी है, तो जो स्टेट्स आपको यहाँ पे अभी विजिबल नहीं है वो सारे स्टेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. Then comes districts, right? कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको देखना है कि स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या परफॉर्मेंस है, या कोई फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का कोई डिस्ट्रिक्ट है उसका परफॉर्मेंस क्या है, राइट? गुजरात का इंदौर डिस्ट्रिक्ट है फॉर एग्जांपल, तो उसका परफॉर्मेंस क्या है. तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा अवेलेबल है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा. एंड देन कम्स द रीजन लिस्ट. तो अभी कौन से स्टेट के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, राइट? और उसका हर एक का परफॉर्मेंस क्या है, राइट? तो यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट or check which are the districts available. So in Gujarat we have all these districts which are available, and for most of the districts we will have data, right? तो ऐसा आप हर एक स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ से डेटा चेक कर सकते हैं. Okay, so now let us come to the actual point. कि we were discussing कि there is a concept called as geographical timeline, and I have shown you that as well कि ये क्यों जरूरी है. ठीक है. We were discussing that if you go to this particular lines, right, which we call as a geographical timeline, right? तो इंडिया की जियोग्राफी में क्या क्या चेंजेस आए थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा. सो सपोज आप अभी यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो अलग अलग साल में अलग कुछ स्टेट्स सेपरेट हुए, स्प्लिट हुए हैं, राइट? या कुछ डिस्ट्रिक्ट स्प्लिट हुए हैं, करेक्ट है? तो ऐसे जो भी स्प्लिट हुआ है या कुछ नया स्टेट फॉर्म हुआ है, राइट? सो वो आपको यहाँ से ज्योग्राफिकल टाइमलाइन से मिल जाएगा. ठीक है. सपोज यहाँ पे सम डिस्ट्रिक्ट्स वर स्प्लिट इन गुजरात इन 2013. सिमिलरली इफ यू लुक एट 2014, तो 14 में बेसिकली आंध्र प्रदेश वो स्प्लिट इनटू 2,
which is Andhra Pradesh and Telangana, right? We have two states now, separate states, correct? So अब अगर आपको समझना है कि अगर आंध्र प्रदेश का आपका 2014 के पहले का डेटा और अभी का डेटा आपको कंपैरिजन करना है, राइट? तो आप कर सकते हैं। अभी का आपका आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का कंपैरिजन करना है तो भी कर सकते हैं, या उसका कोई दूसरे स्टेट के साथ में कंपैरिजन करना है तो भी आप कर सकते हैं। ओके, अभी ये डेटा कैसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। Before coming to that, you can look at the readily available articles, right? There are good number of articles which are available on various indicators which are there in States of India database, correct? So there could be articles ranging from unemployment, ranging from agriculture sector, from passenger traffic or infrastructure, right? Or maybe related to some population and demography, correct? So you can go through these articles. I will not go into much detail, but as you all belong to the agriculture university, right? I would just like to show one particular article. Okay, so Kharif area sown lakhs, right? Now, why we are writing this article? What is the reason? What we want to convey? Right, so we have discussed everything, like why we are saying it is lagging, right? तो आप पूरा ये आर्टिकल पढ़ेगा। अभी यहाँ पे जो भी स्टेट्स है उसका सबका यहाँ पे एनालिसिस हमने दिया है, why the situation is like this, right? या फिर अभी कुछ सपोज कोई गवर्नमेंट के नॉर्म से जो फॉर एग्जांपल एमएसपीज वगैरह है, राइट? तो कोई भी चीज है तो हम वी ट्राई फॉर व्हाटएवर रिसेंट इवेंट्स आर देयर, राइट? सो दिस एनालिसिस इज ऑफ यस्टरडे ओनली, राइट? And if you can look at the right hand side, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि हर एक टेरिटरी वाइज अगर आपने कोई स्पेसिफिक स्टेट या स्टेट सिलेक्ट किया तो उसका आपको अभी क्या सिचुएशन है। तो ये टोटल इंडिया का अभी आपके पास यहाँ पे डेटा आपको दिख रहा है। अगर आपको ऐसा स्पेसिफिक स्टेट का कुछ चाहिए, राइट? सो सपोज मुझे अभी दिख रहा है कि गुजरात का अभी का सिचुएशन क्या है, राइट? उसका अर्बनाइजेशन वगैरह कितना है, जियोग्राफिकल एरिया कितना है, राइट? इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस, NSDP, right? So you will get basically profile of the state you would have selected. Okay, so this is where you will get the data. Plus, if you are selecting a specific state, तो उस state के related जो भी indicators available होंगे, कि for example यहाँ पे कुछ news आया था, right? So this is like some flight is going to start. Then with EPCO they are going to plan some FPOs, right? तो ये स्टेट के रिलेटेड जो भी न्यूज है, राइट? सपोज एक्रेज ऑफ कॉटन इंक्रीजेस इन गुजरात, तो ये सारे न्यूज है, दिस आल्सो यू कैन कंज्यूम एज पर योर कन्वीनियंस। सो मोस्ट ऑफ अस वुड बी इंटरेस्टेड इन गुजरात न्यूज, राइट? या फिर कोई स्पेसिफिक स्टेट का आपको न्यूज चाहिए तो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। Okay, so this is where you can go to some articles. You can understand the profile of a given state. You can go through the news of those selected state, right? Now let us go to the data part, right? कि जैसा हमने डिस्कस किया कि इंडस्ट्री आउटलुक है, राइट? इंडस्ट्री आउटलुक में हमने क्या किया, अलग अलग टेब्स दिए थे, टेब्स में जाके अंदर हम वो पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सारे इंडिकेटर्स दिए हैं, जैसा हम कल कमोडिटीज डेटाबेस में देख रहे थे, राइट? तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे अलग अलग इंडिकेटर्स का लिस्ट दिया है। उस पर कोई भी इंडिकेटर पे आप क्लिक करेंगे, राइट, तो उसका फर्दर डेटा आपको दिखेगा। ठीक है, अभी आपको सपोज यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट? यस्टरडे वी वर लुकिंग एट द टाइम सीरीज ऑफ इंडिया. We are looking at the state-wise performance and district-wise performance in terms of agriculture. यहाँ पे आपको state-wise and district-wise कुछ specific indicator चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अभी suppose मुझे ऐसा समझना है कि अभी GSTP, right? अगर हमको कोई specific base year का GSTP देखना है, right? या फिर by economic activity हमको कुछ देखना है GSTP, for example मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या है, अभी सर्विस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, राइट? तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक इंडिकेटर सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जनरली अभी GSVA या GVA एज इन इंडिकेटर यूज करते हैं मेजरली, राइट? सो इन केस यू वांट टू अंडरस्टैंड कि अभी का डेटा उसका क्या है, तो आप यहाँ पे GSVA एट बेसिक प्राइसेस बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस इज द बेस ईयर, एंड
and I'll just select annual. ठीक है, तो उसका जो भी आपने इंडिकेटर सिलेक्ट किया उसका डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। करेक्ट। अभी आपको इन एनी केस अगर आपको समझना है कि ये पर्टिकुलर स्टेट्स में क्या हो रहा है, राइट, इन टर्म्स ऑफ से द प्रोडक्शन पार्ट, राइट, कितना बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है, तो वो भी आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, इट इज जस्ट ओपनिंग। ठीक है, सो आपका ऐसा कुछ एनालिसिस है, वो आप मल्टीपल इंडिकेटर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अलग टेप्स में उसका डेटा भी ओपन हो जाएगा। करेक्ट। ओके, इसके अलावा आपको अगर समझना है कि जैसा कि यहाँ पे हमने दो सेक्शंस में ये डेटा डिवाइड किया है, या दो सेक्शंस में आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा। वन इज स्टैटिस्टिक्स पार्ट एंड सेकंड इज डॉक्यूमेंट्स पार्ट, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको समझना है, जैसे हम देख रहे थे कि कुछ करंट प्राइजेस का, कांस्टेंट प्राइजेस का हमको डेटा चाहिए, राइट। इन दैट केस आई कैन सिलेक्ट दोस स्पेसिफिक थिंग्स, या फिर मुझे चाहिए कि कांस्टेंट प्राइजेस के हिसाब से डेटा चाहिए, देन आल्सो आई कैन गेट दोस फ्रॉम हियर। लेट मी सिलेक्ट फॉर करंट प्राइजेस। ठीक है, सो आई कैन सिलेक्ट any indicator based on my particular requirement and can get the data. ठीक है, इसके अलावा आपको अगर चाहिए कि सपोज आपको give me a minute, I think it is taking time to open, but it will open in a minute. उसके अलावा अगर आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज का डेटा चाहिए, राइट, जैसा हम कल देख रहे थे कि on the left hand side there are options like you can go to time series of India, you can go to say district level performance, right. ऐसा सिमिलरली यहाँ पे भी ऑप्शन है, either you can go to district wise from here and you can select some indicators and you'll get district wise data. करेक्ट है। सिमिलरली इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि अभी डिस्ट्रिक्ट का टाइम सीरीज चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट का भी आपको टाइम सीरीज यहाँ से मिल सकता है। जस्ट अ मिनट, आई थिंक इट इज टेकिंग टाइम। पार्थ, Parth, are you there? sir. Yeah, can you share the screen? I think this is taking time, so if you can just share the screen. Sure, sir. So my screen is visible? Yeah, it is visible now. Okay, sir. You just select this option. Which one, sir? GSV option, which we are discussing. Yeah, just go to state domestic product. And Okay, then select, yeah, GSV at basic price. Just scroll down, come down. Yeah. Okay, GSV at basic prices by economic activity. Page 11. Okay, sir. No, just below that. Yes, sir. Yeah, yes. Correct. So, suppose if you want to understand that what is happening with the various sectors of the Indian economy, right? और उसमें हर एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, राइट, उस केस में आप यहाँ से ये कंपैरिजन कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी सम सॉर्ट ऑफ इंटरस्टेट कंपैरिजन, राइट। तो ये कंपैरिजन से आपको बेसिकली पता चलेगा अभी सपोज कौन सा सेक्टर है जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 2021 का जो इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, राइट, जीएसवी है एट करंट प्राइस, करंट बेसिक प्राइस। अभी 21 का गवर्नमेंट ने डेटा रिलीज नहीं किया, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने रिलीज नहीं किया, बट जिस स्टेट का अवेलेबल है उसका आप यहाँ पे देख पाएंगे,
ठीक है, तो अभी सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल गोवा एज इन स्टेट है या फिर दिल्ली एज इन स्टेट है, राइट। तो दिल्ली का GSVA कितना है, उसका टोटल कितना है, टोटल इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर में से उसका कितना GSVA आ रहा है, राइट। पार्थ प्लीज कोड, राइट। एग्रीकल्चर से कितना आ रहा है, उसके बाद में टोटल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना आ रहा है, उसमें भी माइनिंग क्वेरिंग है, राइट। तो प्रोडक्शन इंडस्ट्री से कितना आ रहा है, या फिर आपको देखना है कि फॉर एग्जांपल सर्विसेज सेक्टर है उसका कितना अभी कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विसेज में हम ट्रेड है, होटल है, वो सारे सेक्टर्स इसके अंदर हम अभी कवर कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा आपको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि भाई अभी कौन से सेक्टर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट, in terms of the total production or total GSVA of the Indian economy, right। तो उसके लिए आप यहाँ पे ये स्पेसिफिक पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे अलग अलग टेप्स दिए हैं, YOY परसेंटेज चेंज, परसेंटेज शेयर इन टोटल, परसेंटेज शेयर इन सब टोटल, परसेंटेज शेयर इन इंडिया, राइट। तो ये हर एक इंडिकेटर क्या है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक ब्रॉडली यू नो, कल हमने ऐसा ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, सो यू माइट बी नोइंग, बट देयर आर फ्यू न्यू थिंग्स। तो आपको देखना है कि सपोज अभी ये एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, पार्थ कैन यू सिलेक्ट 2020 एज अ ईयर लेफ्ट हैंड साइड से, हाँ 1920 सर, करेक्ट, ओके सर, राइट। तो 1920 में अगर आपको अगर देखना है कि फॉर एग्जांपल हर एक स्टेट का क्या परफॉर्मेंस था और लास्ट ईयर की कंपैरिजन में उसका GSVA कितना बढ़ा है, राइट। वो केस में आप यहाँ पे स्पेसिफिक स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका आपको इंटरेस्टेड कंपैरिजन एज वेल, या फिर आपको लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना चेंज हुआ है वो देखना है, तो आपको यहाँ पे YOY परसेंटेज चेंज आप टेप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन देयर आर ऑप्शंस लाइक परसेंटेज शेयर इन सब टोटल, परसेंटेज शेयर इन इंडिया, परसेंटेज शेयर इन टोटल, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं। अभी आपको समझना है सबसे पहले कि ये जो ज्योग्राफी यहाँ पे टाइमलाइन करके एक सेकंड कॉलम जो है उसका मतलब क्या है, राइट। तो वो केस में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन लुक एट द ईयर, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है आंध्र प्रदेश में दिख रहा है जून 2014, करेक्ट, ये एक ऑप्शन दिख रहा है। सिमिलरली आपको अगर समझना है कि सपोज पार्थ कैन यू स्क्रॉल डाउन, आंध्र प्रदेश में जून 2014 है, तेलंगाना अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना में भी आपको जून 2014 दिखेगा, स्क्रॉल डाउन, टेक तेलंगाना, ओके, राइट। सो तेलंगाना में भी यहाँ पे आपको जून 2014 दिख रहा है। इट मींस के वो साल में या वो स्पेसिफिक मंथ में ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्प्लिट हुए थे, या फिर आंध्र प्रदेश में से एक सेपरेट स्टेट बना था व्हिच इज कॉल्ड एज तेलंगाना, ठीक है। सो ऐसा आप अपने हिसाब से कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि कब कौन सा स्टेट का डेटा कब से अवेलेबल है। तो जैसा मैं आपको बताया तेलंगाना का सिर्फ 2014 के बाद का डेटा होगा, जबकि ऐसा हो सकता है कि जो आंध्र प्रदेश है उसका 14 के पहले का भी डेटा अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस particular types of data. Let me try another browser and let me see if I can show this directly. Okay, so I think it works. There's some problem with the browser only. Parth, you can stop sharing. I'll share my screen. sure sir. Okay, so basically now you want to understand that what is the contribution of each and every state in the growth of India, right? So you can go to this percentage share in total. Let me also select 2020. Correct. So now, for example, for 2020, if I want to understand that कौन से स्टेट ने कितना कंट्रीब्यूट किया था इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो यहाँ पे सपोज अभी आंध्र प्रदेश का टोटल कंट्रीब्यूशन था, उसमें से उसके स्टेट के एग्रीकल्चर सेक्टर ने 30%, क्लोज टू 30% कंट्रीब्यूशन किया था। उसके बाद में इंडस्ट्री ने क्लोज टू 25% कंट्रीब्यूशन दिया था, और बाकी का है जो कि उसका सर्विस सेक्टर है
उसने क्लोज टू 43% कंट्रीब्यूशन किया था, राइट. सो नाउ if you want to understand that, so these are for all the states this data would be available, correct. Then you want to understand percentage share in subtotal, correct. So you can get this particular percentage share in subtotal. So suppose out of total contribution of say agriculture sector in Andhra Pradesh, right, how much crops has contributed, how much livestock has contributed, how much forestry has contributed, and some others, right. So this is where you will get industry segment wise or specific sector wise contribution of each and every indicator, right. Now there is one more which is called as percentage share in India, right. So what is there in percentage share in India? So for example, out of total India's contribution, you want to understand that which state has contributed the most in the development of our particular economy, right. So you can see Mizoram, Sikkim, West Bengal, right. So these all states contribution are available here. Okay, Parth, can you explain few more indicators? Parth? Yeah, can you explain some more indicators in detail? Okay, Yogesh sir, am I audible properly? Yogesh sir, am I audible? Shraddha ma'am? Yes, yes, sir. Okay, no problem, fine. So I'll continue. So basically now you want to understand that which are the other indicators available in this database. तो उसके लिए आप बेसिकली हमने सिलेक्ट किया था यहाँ पे स्टेट 6 पे स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया था. अभी कुछ डेटा होगा जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा अवेलेबल हो सकता है, राइट. सो सपोज आपको अभी समझना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का क्या डेटा अवेलेबल है, तो उसके लिए आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज में जाएंगे, करेक्ट. देन डिस्ट्रिक्ट वाइज में डेटा में आपको चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये हर एक डिस्ट्रिक्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है in terms of growth of Indian economy, right. So you can also select that data, correct. So for example you want to look at कि हर एक डिस्ट्रिक्ट, सपोज यहाँ पे महाराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा. तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी क्या कंट्रीब्यूशन है वो अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा ले सकते हैं, ठीक है. एंड अगर आपको देखना है कि इंडिया के ग्रोथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है. अगर आप देखेंगे मींस महाराष्ट्र वगैरह है, राइट, या even in Gujarat there are some districts which are very I would say growing districts, right. They have high growth. So in that case if you want to understand, तो वहां से आप ये पहले इंडिकेटर्स सारा सिलेक्ट करके ये डेटा देख सकते हैं, ठीक है. सो जैसा स्टेट वाइज मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको डेटा मिलेगा. अभी आपको कई बार ऐसा होगा कि आपको स्टेट का टाइम सीरीज चाहिए, राइट. तो स्टेट के टाइम सीरीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सिलेक्ट सम स्पेसिफिक स्टेट, राइट. तो सपोज अभी मुझे यहाँ पे देखना है कि ये यहाँ पे मैं एक स्टेट स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ, या फिर मैं एक स्टेट सिलेक्ट करता हूँ उसकी डिस्ट्रिक्ट का हमको टाइम सीरीज देखना है. सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ महाराष्ट्र, ठीक है. तो हमको देखना है तो महाराष्ट्र का अभी परफॉर्मेंस क्या है. तो महाराष्ट्र का अगर टाइम सीरीज चाहिए तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नेविगेट कर सकता हूँ, ठीक है. और दूसरा था कि आपको सपोज समझना है कि अभी इसके जो डिस्ट्रिक्ट है अगर उसका डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा अवेलेबल है, इन दैट केस यू विल बी एबल टू गेट दिस डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा फ्रॉम सिलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर स्टेट फ्रॉम हियर, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है या उसके जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर जो आपने स्टेट सिलेक्ट किया है उसका अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा अवेलेबल होगा
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अभी हम क्या देख रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं महाराष्ट्र का टाइम सीरीज देख रहे हैं, राइट। लेट मी आल्सो सिलेक्ट सम अदर स्टेट। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश मैंने सिलेक्ट किया है। तो उत्तर प्रदेश का मुझे अगर टाइम सीरीज चाहिए तो आई कैन गो टू स्पेसिफिकली स्पेसिफिक स्टेट यूपी, राइट। अभी उसका जीएसटी में कितना कंट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा, ठीक है। प्लस अगर उसका डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा अवेलेबल है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक स्टेट, ठीक है। अभी जैसा कि यहाँ पे आपको मिल रहा है जो कि यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, आगरा है, राइट, या इलाहाबाद है, अमेठी है, राइट। तो ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का भी आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मिल रहा है कि उसका कंट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं जनरली डीडीपी जो बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हम जिसको बोलते हैं, करेक्ट। तो वो आप यहाँ से सिलेक्शन करके उसके बाद में आपको डेटा मिल सकता है, ठीक है। सो यू कैन गेट दिस डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज डेटा in case if you want, correct. Apart from this, what will you get? So these are the simplest things. Similarly, जो पिक्चर हमने जो पहले देखा था कि जैसा कि यहाँ पे आपको फेवरेट रिपोर्ट्स सेट करने, you can save these reports as a favorite reports, ठीक है। So I think this is quite simple. Again आपको अगर आप यहाँ से ही नेविगेट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा देख रहे हैं, उसमें से हमको फिर से इंडिया का टाइम सीरीज चाहिए तो हम यहाँ पे इंडिया पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में जो इसका हम डेटा देख रहे हैं, इन शॉर्ट इट गोज लाइक दिस, राइट। इंडिया है तो इंडिया में हम फिर से वो सारे स्टेट का कंपैरिजन देख पाएंगे। इसमें आपको जो भी पास्ट के कोई भी साल का भी चाहिए तो आप यू कैन सिलेक्ट अप्रोप्रिएट हियर एंड यू विल बी एबल टू गेट द डेटा, ठीक है। सो आई थिंक यू आर वेल अवेयर अबाउट द नेविगेशन पार्ट। आपको स्टेट चाहिए तो यू सिलेक्ट स्टेट, यू वांट इंटरस्टेट कंपैरिजन तो यहाँ पे सेंटर में आप यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए तो आपका इंटरस्टेट कंपैरिजन आ जाएगा। Fine. So I think this is the basic navigation, right? Still you need further details. Suppose अभी जैसा मैं आपको बता रहा था कि state wise export का डेटा चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको ले ट्रेड, करेक्ट। तो ट्रेड के अंदर आपको समझना है बेसिकली कि हर एक प्रोडक्ट वाइज, कमोडिटी वाइज कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन से स्टेट से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट। सो दिस यू जस्ट हैव टू go and understand and for example यहाँ पे आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी में कुछ डेटा अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे इंडियन रुपीस में है, यूएस डॉलर में है, राइट। ऐसे अलग अलग करेंसीज में भी डेटा यहाँ पे जो DGCNS ने रिलीज किया है वो फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा आपको अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। अभी सपोज मुझे चाहिए कि ये डेटा डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाइज एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, ठीक है। उसमें मुझे चाहिए कि फॉर एग्जांपल नॉन पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट प्रोडक्ट्स व्हिच इज कॉल्ड POL, राइट। तो POL नॉन POL प्रोडक्ट्स में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है अभी, तो उसके लिए मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ वेरियस फ्रीक्वेंसीज। फॉर एग्जांपल आई वांट टोटल एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, आई जस्ट सिलेक्ट मंथली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मंथली फ्रीक्वेंसी का इसका सपोज अभी गवर्नमेंट ने February 21 तक का उसमें डेटा रिलीज किया है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी आपको फर्दर अंडरस्टैंड करना है कि हर एक एग्रीकल्चर कमोडिटीज फॉर एग्जांपल कैश्यू वगैरह है, राइट, या सीरियल प्रिपरेशन है, फ्रूट्स है, राइट, मीट प्रिपरेशन है, ऑयल मिल्स है, राइट, पल्सेस है, स्पाइसेस है, करेक्ट। तो हर एक स्टेट कितना एक्सपोर्ट कर रहा है कौन सी प्रोडक्ट का, ऐसा हो सकता है कि द प्रोडक्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू कोयल और मे बी रिलेटेड टू say coconut, right, these are exported most from the southern part of country, right, South India से शायद वो ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, करेक्ट है। तो अभी ये गवर्नमेंट ने जहाँ पे जो क्लासिफिकेशन दिया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ये डेटा मिल जाएगा। अगेन इफ यू वांट टू लुक एट टाइम सीरीज ऑफ गुजरात की, गुजरात से हम टोटल कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो वो केस में आप एक स्पेसिफिक स्टेट सिलेक्ट करके उसका भी टाइम सीरीज का डेटा देख सकते हैं। तो अगर हमको देखना है कि अभी बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक क्या इम्पैक्ट हुआ है, राइट, तो ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज अभी लास्ट ईयर का आप देख सकते हैं डेटा कितना, बिकॉज द एक्सपोर्ट्स वर नॉट इन गुड शेप फॉर सम क्वाइट सम टाइम, राइट। तो अभी नाउ अगेन आर वी रीगेनिंग दैट ग्राउंड और व्हाट, राइट,
यहाँ पे आप देखें अगस्त में थोड़ा कम हुआ था, देन अगेन वी आर इम्प्रूविंग, राइट. So I think the last data is for 21, right? And we have given some certain notes as well, so that as a researcher you are sure कि भाई जो डेटा मिल रहा है वो क्यों अभी तक का लेटेस्ट अवेलेबल नहीं है. अगर कोई स्पेसिफिक रिमार्क्स वगैरह वो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएंगे, ठीक है. Then you want to look at POP percentage change. I had explained this yesterday. Still I'll take a minute. ठीक है. POP क्या होता है? POP is basically period over the previous period, right? कि यहाँ पे सपोज हम मंथली डेटा देख रहे हैं तो हमारे लिए प्रीवियस पीरियड कौन सा होगा? प्रीवियस मंथ, राइट. तो एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ ये इसका एक्सपोर्ट बढ़ा है, कम हुआ है, राइट. तो यहाँ पे हम जैसे हम डेटा के हिसाब से ही देख सकते थे, बट हमको पता है कि ये फरवरी में थोड़ा एक्सपोर्ट बढ़ा है एज कम्पेयर टू जनवरी 20, right? So you can look at this POP data. You know this percentage share in total now. You know percentage share in India कि इंडिया में टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें से कितना कंट्रीब्यूशन गुजरात का है, राइट. और टोटल परसेंटेज शेयर इन टोटल इसकी टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कैश्यू है या दूसरे जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, राइट. तो वो भी आप यहाँ पे आइडेंटिफाई और एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे close to 8.11% we are exporting, like the good contribution is from castor oil, right, and some other products like cotton row including waste, right. So we produce good amount of cotton, right. So उसका कितना contribution है, right. So as a researcher you will need such quick data points, right, fast frequency data. Then comes quantity. परसेंटेज शेयर इन इंडिया, यू नो उस पर्टिकुलर सपोज हमने गुजरात लिया है तो गुजरात कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, तो दैट इज परसेंटेज शेयर इन इंडिया, ठीक है. उसके बाद में आपको चाहिए कि फॉर एग्जांपल क्वांटिटी वाइज अगर देखना है कि कितना क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, करेक्ट, तो उसका भी आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, right. So I think this is very easy navigation, and navigation is close to similar to or your database, which is commodities, which we discussed yesterday, right. So I'm not going into all the indicators. I'll quickly switch to the other part where you can find all the documents, right. जहाँ पे आपको सपोज अभी आपको समझना है कि say for example एग्रीकल्चर का डेटा हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो हमने क्या किया, हमने सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो हमने यहाँ पे दिए हैं. जैसे हम IMD से कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं जो कि आपका रेनफॉल का डेटा होगा, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज का डेटा होगा, राइट. तो वो सारा डेटा हम IMD से कलेक्ट करते हैं, राइट. देन देयर आर सर्टेन डेटा पॉइंट्स जो हम स्पेसिफिक डायरेक्टरेट से कलेक्ट करते हैं, डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से वहाँ से कलेक्ट करते हैं, ब्यूरो जो होता है वहाँ से कलेक्ट करते हैं. देन देयर इज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, देन देयर इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम वेयर वी कैप्चर द डेटा. फर्टिलाइजर का कुछ एसोसिएशन है वहाँ से हम स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कर रहे हैं, राइट. हॉर्टिकल्चर का कुछ बोर्ड है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. सो ये सारे डेटा सपोज अभी ये खरीफ क्रॉप का कवरेज का कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने कल ही रिलीज किया है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करके अपने पास रखना है. तो यू कैन ऑल्सो सेव दिस फाइल और लेट मी ओपन सो दैट. तो हम क्या करते हैं, ये सारे सोर्सेज से ये डेटा कलेक्ट करते हैं, राइट. और उसके बाद में वो सारे सोर्सेज को फॉर एग्जांपल आपको डाउनलोड करके रखना है, राइट. ये डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट भी आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, राइट. तो कई बार ऐसा होगा कि हम कुछ डेटा है जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, कोई लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे दिया है, राइट. तो उसको भी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन वी पुट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट. तो जितना भी मैंने आपको डेटा दिखाया उसमें एक चीज कॉमन था कि आपका जितना भी इंडिकेटर्स है, राइट, वो आपको इंडिकेटर्स सारे कॉलम वाइज मिल जाएंगे और रो वाइज आपको सारे स्टेट जो हम पहले देख रहे थे जैसे सारे रो वाइज स्टेट आ जाएंगे, कॉलम वाइज आपकी जो भी इंडिकेटर है या इंडिकेटर सेट्स आपने सिलेक्ट किया उसका डेटा आ जाएगा. सो इट बिकम्स योर रिसर्च इजी, राइट. इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू एनालाइज द डेटा. मतलब इसका होगा कि कई बार गवर्नमेंट का ही ये सारा डेटा है, राइट. कुछ डेटा ओपन सोर्स नहीं होगा, बट क्या होगा कि व्हेन यू गो फॉर एक्चुअल कंपैरिजन कभी आपको फॉर्मेट्स के डिफरेंस की वजह से काफी सारा काम उस पे करना पड़ेगा. So what we do here is we make your work simpler. You can quickly do this analysis. You can also use some of the other tools which are available in our particular database. जैसा कि मैं भी आपको एक tool दिखा रहा हूँ. So these are some of the documents, some of the source documents, right?
from where we capture the data. You can use this document as well. This is also accessible to all of you. Okay, so now let us come to the final part in States of India, which is SOI DX. What is DX? DX is basically data extraction tool, right? So this is part of States of India database. So now, for example, you want to understand that what is, say for example, what is the time series of Gujarat, right? And for some select India, for example, I want to look at infrastructure as an indicator, and then I want to see, I want to download whatever time series data is available in few or 5 clicks, right? In that case, you can simply select all these indicators in one go, and then you can simply download in a text file. So suppose I want to look at some of the indicators. So everything is explained here, right? And now, for example, if you are more interested in what we how we classify a state, or how the district formations are there, right? If there are geographical boundaries, right? So how we have classified in a geographical timeline. So you can download this document. So everything we have explained here, right? So we have given region ID to each and every state or district, right? So then there will be a total split, partial split, right? You want to understand these terminologies, you can just understand. Correct. Now, apart from this, there will be one more document which will be available once you click next step. So here in a SOIDX, आपको जो भी डेटा है वो सिंपली 4 स्टेप में आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है? अभी ये जो डेटा है आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जाना है. उसके बाद में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि वेदर आपको कौन सा डेटा चाहिए, वेदर यू वांट डेटा फॉर ऑल द स्टेट्स, ठीक है? ऑल स्टेट्स में ऑल लाइफ स्टेट्स में क्या डिफरेंस है? ऑल स्टेट्स इज कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि आंध्र प्रदेश, उसका अप्रैल 70 के बाद का हमारे पास डेटा है, बट टिल उसका सेपरेशन जो मई उस जून में उसका सेपरेशन हुआ था, तो मई तक का उसका जितना डेटा है वो आपको देखना है. तो आप यहाँ पे ऑल स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे सारे स्टेट्स में बिफोर सेपरेशन एंड आफ्टर सेपरेशन और स्प्लिट वो सब डेटा आ जाएगा. बट अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ऑल लाइव स्टेट्स, तो अभी सपोज अभी आंध्र प्रदेश का जून 14 से लेकर अभी तक की डेट का जो भी डेटा है वही यहाँ पे आएगा, ठीक है? अभी सपोज इफ आई सिलेक्ट ऑल स्टेट्स, इट विल सिलेक्ट ऑल द स्टेट्स व्हिच आर अवेलेबल. इफ यू वांट डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा, करेक्ट, सो यू कैन सिलेक्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, correct, and then if data is available for district level, right, then the data will get extracted. Then you need to go to next step. If you want to avoid this district level data as of now, let us unselect. Again, the same goes for all live districts on all districts. It's the same, right? So I have selected 46 regions, right, before and after separation. All the states I have selected. In the next step, I will be able to select which indicators I want to select or download, right? So suppose, for example, I would like to download some of the, say, agriculture sector indicators. I have not gone through the agriculture sector, but broadly let me explain it here. Right. So yesterday we discussed that area production and yield data. So state-wise APY data, if you want, it is again available here. Animal husbandry data is available here, right? So what is the, say, egg production, right? Or maybe you want to look at some data related to the milk production, right? Various types of milk or something, right? So then milk, then meat and other data. These all data points are available, right? So maybe you can select these indicators, right? Or maybe if you want to search a specific indicator, for example, where milk indicators are available, I can search as well. ठीक है, तो ये मेरे सारे जितने भी मिल्क के रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं वो मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ. सो दैट मैं वांट टू सिलेक्ट स्पेसिफिक इंडिकेटर्स, वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? अभी उसके बाद में सो यू कैन आइदर सिलेक्ट ऑल द इंडिकेटर्स और मे बी यू कैन सिलेक्ट व्हाट आर द रिलेवेंट इंडिकेटर्स. मैंने अभी क्या किया, सभी एब्सोल्यूट इंडिकेटर्स सिलेक्ट किए हैं.
कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होंगे जो परसेंटेज शेयर, कि हर एक जो टोटल प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन है, जैसे हम देखते हैं परसेंटेज शेयर वाइज इंडिकेटर्स, राइट। तो ऐसा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यू कैन गो टू नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल स्टेज, जहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट द डेट फॉर्मेट, राइट। यहाँ पे जैसा कि आपको यहाँ पे ईयर मंथ एंड डेट फॉर्मेट है, you can select date, month, year format. You can select year, MMDD format, right? So I'm just selecting without predefined indicators there. Then I can select the frequency. So whether I want annual data, quarterly, cumulative, weekly, monthly, daily, whatever is available, it is given here, right? So suppose I select monthly frequency data, right? I can select from which date to which date. Suppose I want this particular data from say 2019. July 1st July 2019 to till date, right? So I just need to simply select, and I want absolute values. I want say YOY percentage change. I want, if it is possible, I can take POP changes as compared to previous month. What is the change in terms of production or some milk production or some other indicators which you might have selected. उसके बाद में क्या आएगा, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है कि सपोज अभी मैं ये जो एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ उसका नाम क्या है, राइट। तो ये डिस्क्रिप्शन क्या है कि फ्यूचर में भी आपको डेटा री एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। तो अभी सपोज मैं यहाँ पे इसका एक डिस्क्रिप्शन का एक नाम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ ऑल स्टेट, ठीक है। ऐसा वॉट एवर डिस्क्रिप्शन नेम आई वुड गिव, right, and then I'll give self specification and extract data, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितने भी डेटा पॉइंट्स है उसको सिलेक्ट, इसको डाउनलोड कर देगा, राइट। तो हमने यहाँ पे दिया था एब्सोल्यूट वैल्यू, YOY परसेंटेज चेंज, POV परसेंटेज चेंज, और उसमें हमने जो भी लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स दिए थे यहाँ पे ऑल द 46 रीजन, दिस इंडिकेटर फॉर्मेट जो भी है स्पेसिफिकेशन वो आपको यहाँ पे दिखेगा। इन फ्यूचर अगेन इफ यू वांट टू री-डाउनलोड दिस डेटा, जैसे कि मेरे कुछ पास्ट में मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए थे, मेरे पास के स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे उसको वो फाइल को री-डाउनलोड करना है, री-एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, सो आई कैन क्लिक हियर ऑन री-रिक्वेस्ट डेटा एक्सट्रैक्शन। जैसे उसका डेटा एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, मुझे यहाँ पे दिखेगा कि ये फाइल अभी डाउनलोड हो गई है, ये रेडी टू डाउनलोड है, राइट। या यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग टाइम भी दिखाएगा कि कितने कब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, कब प्रोसेस एंड हुआ है, राइट। तो आई थिंक दिस विल टेक 1 or 2 minutes. Till that time I can switch to some other products or some other databases, right, and maybe meanwhile I can also take up some questions if there are any. So Shraddha ma'am or Yogesh sir, if you can just help me with the questions from the students or participants. So there is no question. Okay, no problem. So students, please feel free to raise your queries, ask your questions, right? Because this is the time where you can learn these things the most. No doubt, once you use, you will know in much detail. But as of now, also, if you have some questions, please feel free. ठीक है। तो अभी यहाँ पे आई थिंक SYDX में हमने 3-4 इंडिकेटर्स देखे थे, बट आप जैसे ही कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जाएंगे, जैसा कि STP में हमने देखा था कि GSDP, GSPA का डेटा अवेलेबल है, वैसा इन्फ्लेशन के अंदर कुछ अलग इंडिकेटर्स या सब क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, CPI है, कमोडिटी वाइज होलसेल एंड रिटेल प्राइसेस है, राइट। ऐसे हर एक टॉपिक वाइज आपको अलग अलग डेटा मिल सकता है। जैसे कि आपको बैंकिंग का डेटा है तो आपको बैंकिंग क्रेडिट कितना मिल रहा है, ठीक है, बाय पॉपुलेशन ग्रुप। किसी को माइक्रो फाइनेंस के डेटा में इंटरेस्ट हो सकता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में PN JDY में कितने लोग अभी यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं, राइट, जनधन योजना में कितने अकाउंट्स है, ऐसा कुछ डेटा देखना है। सो दिस इज बैंकिंग इज ऑल RBI डेटा, राइट। आपको देखना कि एग्रीकल्चर सेक्टर को अभी कितना क्रेडिट मिल रहा है, वो डेटा बैंकिंग के अंदर आएगा, करेक्ट। देन देयर इज पब्लिक फाइनेंस डेटा, ठीक है। उसमें पब्लिक फाइनेंस में बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है या रिसिप्ट है उसका या उसका एक्सपेंडिचर है, उसका सारा डेटा उसमें भी स्पेसिफिकली आप सिलेक्ट करेंगे। सोशल सर्विसेज के पीछे कितना आप वो अभी स्पेंड कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज के पीछे कितना आप स्पेंड कर रहे हैं, राइट, या कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल कितना है, ठीक है,
या आपको डेफिसिट वगैरह देखना है स्टेट गवर्नमेंट किसको इंडिकेटर्स सारे यहाँ पे दिए हैं, राइट. सो दिस इज इन पब्लिक फाइनेंस. Agriculture, I think we discussed, but still you can get all this API data, animal husbandry, input data, which we discussed yesterday as well in commodities database. But यहाँ पे आपको state wise कुछ data मिल सकता है. In commodities, we do not have animal husbandry data, which is available only here in States of India database. ठीक है. उसके बाद में आपको लैंड होल्डिंग वगैरह का जो हम डेटा देख रहे थे वो सारा अवेलेबल है. यू वांट टू लुक एट some tube wells and some other irrigation facilities data. That is there. एनर्जी कंजम्पशन का डेटा, एनर्जी ट्रांसमिशन का सारा डेटा यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है. सो वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच इज इलेक्ट्रिसिटी, कोल, लिग्नाइट, क्रूड ऑयल, राइट. ये सोर्सेज से क्या अभी उसका कितना जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कितना है, उसका सरप्लस वगैरह है या क्या है, राइट. वो सिचुएशन आपको यहाँ से ग्रोथ जनरेशन कितना है, राइट. तो वो सारे इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे एक ही जगह से मिलते हैं. कंजम्पशन कितना हो रहा है, राइट. पावर सप्लाई वगैरह कितना है, ठीक है. तो ये यू कैन डिसाइड व्हाट इंडिकेटर्स आर ऑफ योर इंटरेस्ट. ठीक है. हर एक रिसर्चर्स, फॉर एक स्टूडेंट को हर एक इंडिकेटर का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट दिस इज ब्रोडली आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली आपको रेलवे, रोड, पोर्ट, सिविल एविएशन, ये सब डेटा, पोस्ट ऑफिस है तो उसके अंदर कितना अभी ये है नंबर ऑफ से पार्सल्स वगैरह जो कुछ बढ़ रहा है. टेलीकम्युनिकेशन में नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने बढ़ रहे हैं, राइट. तो वो सब डेटा मिलेगा आपको. पोर्ट में मेजर एंड माइनर पोर्ट का आपको डेटा मिल जाएगा. पोर्ट में अभी अराइवल वगैरह का कुछ आपको डेटा चाहिए, राइट. तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कितना हो रहा है बाय कमोडिटी, राइट. तो यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट कितना है, करेक्ट. तो ये सारे आप यहाँ पे इंडिकेटर्स में से इंफ्रास्ट्रक्चर से ले सकते हैं. इंडस्ट्री इंक्लूड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर दिस बिकॉज ये सेम चीजें मुझे फिर से इकोनॉमिक आउटलुक में भी दिखानी है, राइट. तो इंडस्ट्री के अंदर आपका बेसिकली एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का डेटा हम देख रहे हैं, ठीक है. ये अगेन गवर्नमेंट का डेटा है. तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या अभी नंबर ऑफ फैक्ट्रीज ऑपरेशन में कितने हैं, राइट. कैपिटल कितना इंडस्ट्री क्या है, राइट. देन देयर आर सम रेशियोज व्हिच आर आल्सो अवेलेबल. इकोनॉमिक सेंसस का आपको डेटा चाहिए. You may need data related to automobile in any case if you want, like for example tractors वगैरह है, so that is also covered in the automobile. ठीक है. तो पूरा इकोनॉमिक सेंसस का डेटा अगेन गवर्नमेंट का डेटा है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे. इन्वेस्टमेंट, दिस इज अ प्रोप्राइटरी डेटाबेस ऑफ CMI. जैसा हम कैपेक्स वहाँ पे देख रहे थे इंडस्ट्री आउटलुक के अंदर, राइट. जैसा आपको यहाँ पे देखना है कि कितना अभी FDI का इनफ्लो कितना है. जैसा कि आपको शायद न्यूज पता होगा, सो गुजरात वाज द हाईएस्ट in India to get the FDI before I think few months, right. तो ऐसा आपको FDI inflow state wise देखना है कितना आ रहा है, या कितने इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम्स फाइल हुए हैं, राइट. IMs फाइल हुए हैं, या फिर आपको प्रोजेक्ट वाइज देखना है कि कौन से प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है. टोटल इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड समझना है, राइट. तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं. बाय ओनरशिप you can understand by industry, by status, right. Trade we have already discussed. Many of you would be interested in some social indicators like demographic, population, or maybe some amenities they are holding, right. So how many people are having say the kacha makan, right, or maybe some assets like whether they have some basic assets available with them or not, right. तो ऐसे यहाँ पे indicators आपको यहाँ पे जो भी क्लासेस जिससे अगर गवर्नमेंट डेटा, करेक्ट. डेमोग्राफिक्स में आपको देखना है कि अलग अलग स्टेट में अभी ज्योग्राफिकल प्रोफाइल उसका क्या है, पॉपुलेशन प्रोफाइल क्या है, राइट. तो वो सब आप यहाँ से पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, हाउस होल्ड का डेटा आपको यहाँ से मिलेगा. एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली आपको एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा मिलेगा जो कि अलग अलग सोर्सेज से भी हम कलेक्ट करते हैं. जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट नोन सोर्सेज EPFO. तो कितना EPFO में कितना लोग अभी एड हो रहे हैं, राइट. सो दैट कैन बी वन ऑफ द प्रॉक्सी कि अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है. देयर आर मोर नंबर people who are enrolling for a EPFO or provident fund, then they we can say that the employment is increasing, correct. Similarly दूसरे indicators भी यहाँ पे employment ASI का जो डेटा है उसमें employment and labor cost के related कुछ डेटा उन्होंने publish करते हैं. Then comes your unemployment data, which is proprietary data again from CMI, and this is taken from the Consumer Pyramid Household Survey which we had discussed yesterday. आपको जेंडर वाइज, एज ग्रुप वाइज आपको देखना है कि एम्प्लॉयमेंट कितना है. स्पेशली आपके लिए कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट वुड बी द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, बिकॉज दिस रूरल पार्ट हाईली रिलाई ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर,
राइट. तो वहाँ पे कितना एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है. You want to understand it by say some labor force participation, right? So such classifications are also available here. Okay. Then you want some NSSO data, right? Then their particular labor force related data, that is also given here. Right? But this unemployment data from CMI that you will get on monthly basis, right? So if you want this data, you can just check those. Then Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, right? So how many people are enrolled with this, or maybe how many workers are under this, right? That also you'll be able to check. Then comes education. So number of schools, infrastructure which is available, how many students got registered for pre-primary, secondary, right? Or maybe some other indicators that is also available here. Then comes health. So number of communicable diseases are there, morbidity, right? So now this is important. COVID-19 related data, right? So how many persons got vaccinated against COVID-19? So daily data is available for various states, right? Then you want some mortality rates, you want some fertility rates. That data is there in this section. And then comes crime, right? So crime is something where you want to understand like number of incidents. For example, I want to see the total complaints filed, right, on various types of crime, right? So that you can get it from here. And then comes election related data. So which party won the election, which party won the majority, right, or some other data you want. So related to election in terms of the assembly and Lok Sabha election. So those data is there in this particular elections section, right? So I hope you are appreciating whatever the data points are available and how you can use this particular data at the optimum level. Okay, so I think I have covered everything about States of India. Let us look at if the data is available in SOIDX now. Okay, I can go to specifications and requests, because we had already requested for data extraction, and yeah, if this is not available, maybe we will look at some other. But anyway, for your understanding, let me refresh the page as well. Okay. If it is ready, if it is available, maybe you will be able to get all these specifications here. Okay. So whatever specifications you have raised in past, it will be available in specifications and requests. You can, if you know a specification ID, you can search by that as well. And you can also share your specification to some of your colleagues, your friends, if you want, right? I think it is not yet ready because we have given several indicators, several years data we have asked for, right? So it may still take some time, but anyway, you get some free files here. You can download this file and you can use this TXT files if you want to use, right? So I think I have covered this part now. Okay, so let me switch to another database. If time permits, in the end, I'll show if this data is available. I'll quickly show you, right? Okay, so let me do one thing. Let me take you to TEDx database now. So that in the end, because economic is such a wide subject, right? So I may not be able to cover in next 10-15 minutes, but TradeDX is something like data extraction tool, right? So उसमें मैं आपको पूरा डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे कि आपका कोई स्पेसिफिक कोड है, राइट? एसएस कोड है, एसएस कोड वाइज भी आपको सर्च करना है, करेक्ट? तो उसके हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो सपोज ओके, आई थिंक for milk and milk product, the SS code is 4202. Correct me if I am mistaken, right? तो आप एक बार कोड देख लीजिए और कोई स्पेसिफिक कोड का आपको एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का देना देखना है, तो हम अभी वो इसमें TradeDX में कवर करेंगे, करेक्ट? So again, you can use the support part, say clarifications. I'm not mentioning in detail now. Let me straight away go to TradeDX. ठीक है? So अभी जैसा हमने SOIDX देखा था, स्टेट्स ऑफ इंडिया डेटा एक्सट्रैक्शन टूल. सिमिलरली दिस इज अ डेटा एक्सट्रैक्शन टूल. इसमें आपको सिंपली सिलेक्ट करना है क्या डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, कौन से साल के लिए चाहिए, राइट? और आपको क्लासिफिकेशन सिलेक्ट करना है. सो लेट मी जस्ट
यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ एक बार, ठीक है। और okay, so I think the notes are given. You want to understand how we have done something, how we have classified, or what sort of data is there, from which year data is available, right? So in that case, you can simply just understand this, right? And अभी यहाँ पे जो भी आपको डेटा एक्सपेक्ट करना है वो आपको 6 स्टेप्स में अवेलेबल है, राइट? तो सपोज आपको अभी सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से क्लासिफिकेशन में डेटा चाहिए. There are two set of classification. One is principal commodities, and this is industry Indian trade classification, ITC classification. There is a smaller difference between both. So ये principal commodities है, उसमें थोड़ा narrow classification है, और यहाँ पे एक broader classification है, right? तो अगर आपको चाहिए कि आपको स्पेसिफिक कोई SS कोड के वाइज सर्च करना है, राइट, ऐसा कुछ है, so you can select ITC, and even if you need some PC classification wise data, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. अभी काफी कुछ डेटा इसमें ऐसा है कि मे बी गवर्नमेंट, दिस इज ऑल गवर्नमेंट डेटा, बट इसमें व्हाई यू नीड दिस डेटाबेस, ताकि अगर आप जैसे कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको टाइम सीरीज डेटा चाहिए, राइट? बट द प्रॉब्लम इज कि जो डेटा है उसमें पहले का क्लासिफिकेशन का डिजिट जो थे, पहले 8 डिजिट का क्लासिफिकेशन था और अभी वो क्लासिफिकेशन 6 डिजिट का हो गया है, करेक्ट? तो वो डिजिट को आपको मैप करना है कि भाई पहले कौन से 8 क्लासिफिकेशन में कौन सी कमोडिटीज कहाँ पे थी, प्रोडक्ट्स कौन सी थी, राइट? तो आप मैपिंग यहाँ पे कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट का कुछ अभी का डेटा मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्लासिफिकेशन अभी का है, बट सपोज फॉर एग्जांपल आपको 1981 से लेके अभी तक का डेटा देखेंगे तो उसमें क्लासिफिकेशंस भी चेंज हुए हैं, राइट? तो ऐसा आपको अभी अंडरस्टैंड करना है, तो उस केस में आपको ये डेटाबेस काफी यूजफुल हो सकता है. You can search by HS code, right? You can search by a specific commodity name. You can search by region. You can search by any country. You can also select whether the products which we are importing, or you can select the products which we are exporting, and you can select whatever sources of data is available, right? So let me take you through those steps now. Okay, so यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो डेटा है अभी अलग अलग स्टेप से, इफ यू वांट टू रीड दिस दैट इज फाइन, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू, ठीक है? अभी अभी सपोज आपको समझना है कि सबसे पहले ये डेटा जो है तो उसमें क्लासिफिकेशंस कौन सा लेना चाहिए, राइट? सो इट मे डिपेंड, डिपेंडिंग ऑन योर रिसर्च यू कैन टेक प्रिंसिपल कमोडिटीज और आईटीसी क्लासिफिकेशन. Suppose, for example, I'm just taking ITC classification for an analysis or for an understanding, and I want to look at the products which we are exporting. Correct. So I will just select principal. I will select ITC classification. I will select the source type which is export, and I'll go to next step. Okay. Then in next step, like the second step is like I want to see exports of country. So we had selected the export option earlier, right? So अगर आपने यहाँ पे export option select किया है तो by default आपको यहाँ पे export दिखेगा, export from India, ठीक है? Then you want to understand, say for example, in next step. So now in this step you don't need to do anything actually. Here you can select a specific country or parts of country, right? Or maybe continent wise you want to select that how many countries are there, specifically which products we are exporting to what continent, which part of that continent, right? So that also you can select, or you can simply select world, right? Once you select world, it will select all those countries in the world, right? So there are close to 271 countries data we have as of now, right? And if you want a specific countries data, so you can click here on this plus sign and you will be able to get this particular classification of a specific continent, right? Now many times it may happen that you want to you don't want to select all the countries,
So I'm just selecting world as in total world's data, total like India's export to the world, and then in next step, if I want to select, say for example, I will go to next step now. Correct, and then I have an option here called as selecting various levels. Now, for example, I'm not very sure, but I think it's 4202. No, there is something related to like milk related, some code is there, right? So I will just select milk. I will just type milk as a product. So milk. Right. Okay, it's a 0401. Sorry. Right. So under 0401 code, right, all the milk related products are available. So milk and cream, right? The skimmed milk is there, right? Or maybe whole milk is there, or maybe any agriculture commodity you can select. I'm just selecting randomly, and you may need milk data as well. That's why I'm just selecting this. You may need some potato or some tomato export or some other like some fruits export data, right? You can literally search by any product name here, right? And now you want to see, for example, यहाँ पे मुझे देखना है कि इसका ये पर्टिकुलर कोड है, उसके अंदर उसको मैंने कहाँ पे ट्री व्यू में कहाँ से आएगा वो, ये कहाँ पे और कोमोडिटीज के अंदर में 04 है, उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स, बर्ड्स एग, हनी, edible oils of animal origin. NES is not elsewhere classified. Sorry, NES is there is some classification which is given there. अभी आपको देखना है कि सपोज 0401, ठीक है, इसके अंदर कितना एक्सपोर्ट हुआ है, या फिर आप उसके अंदर की पूरी सीरीज लेना चाहते हैं, सपोज आपको ये सारा सिलेक्ट करना है तो आप सारा भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर से, ठीक है, या फिर इसके पूरा ट्री में आप चले जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे you see this one, this is the old classification which was and with their number is also given, right? तो ऐसा आपको कुछ ट्रेस करना है तो भी आप यहाँ पे ट्रेस करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं 0402 में जाऊंगा तो उसमें मुझे उसका फर्दर क्लासिफिकेशन मिल जाएगा. So let me select some of the indicators which are specifically related to milk. So whatever you have selected, it will appear here, right? दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे ट्री में डायरेक्टली चला जाऊँ. सपोज अभी 0401 था, राइट? तो आई गो टू 04, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्लस साइन पे क्लिक करूँगा तो मैंने जो भी सिलेक्शन कहीं की है उसको भी मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ. Okay, there is one option available here. If I want to select all the sub levels, ठीक है, जैसे कि 04 है उसके अंदर में आ रहा है the further classification is like 0401 2 3 up to 8 is there, right? or 10 is there, correct? So अभी आपको देखना है कि इसके सब है, उसके अंदर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लेवल दिखेगा कि आपको कौन कौन से सभी उसका सेकंड लेवल तक का क्लासिफिकेशन सिलेक्ट करना है, राइट? या फिर यहाँ पे लास्ट लेवल तक का क्लासिफिकेशन चाहिए, या सेकंड और लास्ट, अगर सेकंड है तो सेकंड ले लीजिए, अदरवाइज लास्ट लेवल तक का ले लीजिए, राइट? या फिर ऑल लेवल्स अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ऑल लेवल्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल इसमें कुछ 75 डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है विद इंक्लूडिंग ऑल दिस सब क्लासिफिकेशन, ठीक है? तो एक्चुअली वी नीड ऑल दिस डेटा, that's what I'm just trying to show you. Okay, so this is where you just need to select. It's a very simple selection to select, and in the next step you can go to next step. So for example, you understood this, the commodities will appear here, the countries which you might have selected, it will also appear there, right? Now you need to select the frequency, as we have already seen in our earlier database, SOIDX, right? Select monthly, annual, cumulative, whatever frequencies are there. उसके बाद में आपको चाहिए करेंसी, आपको कौन सी करेंसी में डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, whether you want in Indian rupee or maybe in US dollar, right? वो आप एक बार सिलेक्ट कर लीजिए. उसके बाद में कौन सी
सी डेट से कौन सी डेट तक का आपको डेटा चाहिए, राइट. सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू सिलेक्ट, लेट मी टेक अ क्लोजर हियर व्हिच इज 1 ईयर डेटा ओनली. ठीक है, सपोज मुझे लास्ट ईयर से अभी तक का डेटा चाहिए. ठीक है, एंड देन अगेन यू नीड टू सिलेक्ट द डेट फॉर्मेट, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. And same like what we have done in SOIDX, आप select कर सकते हैं यहाँ पे, which is the name, which is say for milk, right? Whatever, like whatever name you want to give, you will give. Then again save specification and extract data. ठीक है, यहाँ पे कुछ पास्ट का मेरा डेटा कुछ अवेलेबल है, जैसे कि जिंजर इंपोर्ट का कुछ मैंने डेटा वो फाइल एक जनरेट किया था, राइट. उसका डेटा अभी अवेलेबल है. सो आई कैन डाउनलोड दिस फाइल एंड आई कैन सेव. सो दिस विल बी अ जिप फाइल. जिप में एक टेक्स्ट फाइल रहेगा, वो टेक्स्ट फाइल बेसिकली आपको यूज करना है. और अगर आपको टेक्स्ट टू एक्सेल में कन्वर्ट कैसे करना है वो आपको पता नहीं है, so please write down, please write in chat box. I can also take you to that, right? It's actually very simple, but I think there is a good audience available, तो सबके लिए बेनिफिशियल होगा. तुमको टेक्स्ट एक्सेल कैसे कन्वर्ट करना है, लेकिन जहाँ पे भी आप डीएक्स प्रोडक्ट्स देखते हैं तो डीएक्स प्रोडक्ट्स में सिंपली आपको टेक्स्ट में ही डेटा आएगा. या फिर आप जैसे कि हम कमोडिटीज में देख रहे थे, इंडस्ट्री आउटलुक में देख रहे थे, डाउनलोड इस डेटा का ऑप्शन होता है, उसमें टेक्स्ट में ही डेटा आपका आएगा. तो टेक्स्ट से आपको फिर एक्सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So in case if you want me to take you through those things, from say converting from text to Excel, please let me know. I can help you with that. Okay. So now your data would be ready. जैसे कि ये आपको एक फाइल मैंने example एक आपको दिखा दिया है कि ये already available है. ऐसा ही आपका दूसरा फाइल जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा, राइट. तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का फाइल दिखेगा, जो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं. You can also refresh your page. You can come to know once it is ready. You will come to know okay, this data is available now, right? And you can download this file like what we have done here. Correct. So I think you can select specific commodities. You can select by HS code. You can select by any region, any part of the world. You can select by all the countries in the world, right? So this is the simplest data extraction tool, right? But all the past classification, all the current classification, all the latest data is available here, right? So can you let me know if you need any assistance in terms of trade DX, or else I can move to the last product, which is economic outlook. Shweta ma'am, if you can help me with the questions. There are some questions. I'll take up those. Otherwise, I'll move to the other part, or the last part of this session. Okay, I assume that there is no question, right? And I would like to quickly switch to the last database, which is economic outlook database, right? Okay, just give me a minute. I'll open another tab. Okay, so in economic outlook, there is no state level data, there is no company level data, there is no industry level data, there is no, I would say, firm level data. It is all macro, right? You want to understand how Indian economy is performing, right? Then in that case, you will need this particular database. Now, why this is needed? Because many times you want to understand what is happening with some of the sectors, right? Because many of the sectors are correlated. If there is no manufacturing, then service sector may also get affected, right? Or maybe if there is no production in terms of agriculture, then some other sectors may also get affected. Like the service sector, this manufacturing sector also helps in agriculture sector. So, for example, for clothes, we rely on cotton or some other products, right? So similarly, you want to understand what each sector is doing. What is the contribution of each sector in Indian economy? So in that case, you can get a macro view from this economic outlook database. Okay, now let me take you through what sort of data is there.
Give me a minute. Login it. I will just start. Okay. So the process remains the same, like the what we have seen in economic outlook. Sorry, in states of India, the navigation is almost the same, but here we have added a few more tabs. Say for example, in earlier in states of India, we had only statistics and document section, right? But now here you can get four, which is statistics, analysis, forecast, and documents. So I'll explain each of four, and I would like to complete it before one. I really appreciate your patience because you have been with me on this session since more than 2.5 hours now, right? So thank you so much for your time. So okay, let us start. What is there in each and every section? But before that, let me explain what we give on the home page, right? So in a macro economic database, economic outlook, you will get a very good analysis on all the macro aspects, right? So for example, there is a good prospect for 2020, 2022 Kharif crop. Right? This all articles, like many of the articles are very relevant to what research you have been doing, right? So why? So these are the estimated numbers and these are the projected numbers, right? Now from where do we get these projections? So हमारा एक स्पेसिफिकली इकोनॉमिक आउटलुक का, इंडस्ट्री आउटलुक का एक जो टीम रहता है, राइट, वो फोरकास्ट प्रोवाइड करता है, अलग अलग इंडिकेटर्स पे फोरकास्ट प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं, राइट, कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू गो डाउन. These are the forecasted number. Again, in oilseeds production, it will go up in for this Kharif season, right? So sugarcane production will go little, right? Or it will improve a little. Production will improve a little. And again, here in cotton production, you can see there will be some improvement. Now, so how do we write? Why you need this analysis? Because data is something which may be available in some of the open sources, right? What you need is you need analysis and forecast, and secondly, if you need data, you need authentic data, right? Even if you go to Google, you search something, you are not very sure that the data which you are getting is authenticated or not. In that case, you need the authentic sources like CMI, Economic Outlook, or the database of CMI, right? So now you want to understand that ये हमने आर्टिकल कौन से बेसिस पे लिखा है, राइट? तो आप पूरा ये आर्टिकल एक बार, I will not explain this, but it shows that there are good prospects for Kharif crop, right? Since last 2 years, we are fortunate enough to get a good growth in terms of agriculture, right? There has been last 2 years have been good in terms of agriculture performance, in terms of rainfall, and in terms of the actual agriculture production, right? So so this analysis is available. You can just read like what is happening to those areas, so on, right? Or maybe the other analysis which are given here. Right. So I think there are 2-3 articles. You can also select the specific indicators on which you want to extract the data, or you want to get some analysis. Again, going back to home page. This, I think we have already discussed this article. We have seen this article, but if you want to go into more further details, you can go. Then every month we write 3 monthly reviews, right, which are very relevant to those who want to understand what is happening with the various sectors of the Indian economy, what is happening with the macroeconomy, and what is happening to the financial sector or financial market performance of Indian economy, right? So if you can just check this, this is monthly review on macroeconomic performance. Then there is one more on the financial market performance, and for sector performance will be releasing for this month. But if you want to look at some past articles, you can click here on more.
right? And you can get all those past articles, right? So our CEO and MD, Mr. Mahesh Vyas, he himself is an economist, and he writes many articles on employment, unemployment, on investment, on corporate sector, on even on many times on the performance of the Indian economy, right? So you can read these articles. These are the really enriched articles. It will improve your knowledge level substantially, right? So please do read these articles as per your convenience. So, for example, now you have to look at some past articles. So, for example, there was sectoral performance which was available for last month, right? So, if you want to read this article, you can open this. Right? So, there are several. I think all the meaningful indicators we have been covering here, and there is more than 2.9 million time series data which is available, which is really huge, right? And putting all these indicators at one place is itself is a Herculean task, right? So now let us look at that article, and I'll also explain one macroeconomic article, right? So suppose in sectoral performance, we have been covering what is the performance of agriculture sector. So we have been saying that, and we all know that Kharif season has started on a good note, right? So with the support of data, so what is the situation in long period average, right? That there was good rainfall. There was, as you all know, that in June itself we have got good rainfall, right? So because of that, we will get good sowings, right? So what was the situation in last year? Whether there is some improvement? If there is an improvement, what is the improvement, right? So this was the number for last year, right? And these are the percentage change. So you can understand that with the support of data, we have written something. So these articles are actually based on some pre data or maybe some pre-released data by government or some relevant sources. ठीक है, उसके बाद में आपको देखना है कि सो वी हैव सीन एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद में आपको देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री या फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्या सिचुएशन है, राइट? सो इफ वी आर सेइंग लाइक आईएलपी इज इंप्रूविंग, राइट? सो इफ इट इज इंप्रूविंग, तो उसका कंपैरिजन है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी क्या हो रहा है, लास्ट कुछ क्वार्टर्स की कंपैरिजन में क्या हो रहा है, ठीक है? इन केस अगर आईआईपी इंप्रूव हो रहा है, राइट, तो उसके साथ में कौन से दूसरे सेक्टर है जो भी इंप्रूव हो रहे हैं? तो अप्रैल 21 में ये कुछ आईआईपी इंप्रूव हुआ है, राइट? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आल्सो देयर इज अ गुड ग्रोथ इन ओवरऑल आईआईपी इज अ गुड ग्रोथ. यू वांट टू कंपेयर इट टू पास्ट ईयर क्या परफॉर्मेंस था. It may happen that as compared to past year, this particular IIP may be lesser, right? तो आपको अगर देखना है तो आप ऐसा कुछ कंपेरिजन यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेशली फॉर द sector wise analysis, right? Then comes your trade related data, export or import related data analysis there, right? So what is happening to exports, whether we are good at exports now or what? ठीक है, तो ट्रेड बैलेंस क्या है, डेफिसिट है कुछ है, राइट? एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं. अगर बैलेंस है, अगर उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है तो उसका पूरा एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा. देन पीओएल आइटम्स में, नॉन पीओएल में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट? उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स थे. एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ देयर वाज सम ग्रोथ इन द लास्ट month. Like as compared to April 21, there was some growth in export in May 21, right? So that is where you can just go and so from this data you can read that what is happening to various parts, various macroeconomic indicators. Correct? What is happening to silver? What is happening to gold? Right? You can see a good spike in April 21, right? In terms of export, right? Sorry, this is an import. I'm sorry. This is import. So we have imported more gold in April 21, right? And then you want to look at some transportation activity, because if there is a good manufacturing or if there is a good production, right? So it may impact the transportation activity as well. तो अभी क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ रहा है, कम हो रहा है, रेलवे फ्रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट? तो इस कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर क्लोज टू 26%
रेलवे फ्रेट ट्रैफिक बढ़ा है, which is a good sign, right? In March 21 there was good sign. April also there was some improvement, and May also there is some improvement. It is not lesser than what last year situation was, right? Similarly port traffic में क्या हो रहा है, करेक्ट है, तो उसमें भी मेजर पोर्ट्स में से हम अभी क्या कर रहे हैं, फ्यूएल नॉन फ्यूएल में अभी कितना हमारा पोर्ट का ट्रैफिक है, वो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं. तो यू कैन लुक एट दिस वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट? कार्गो हैंडल, पैसेंजर्स हैंडल, अभी आप देख सकते हैं April 21 में अगेन like there were good number of people who have been traveling, right? So you can see as compared to previous year April, there's a good change, good percent change in terms of passengers who were traveling through airway, right? इसके बाद में फ्यूल का डिमांड, अभी फ्यूल is also used in industry, right? So for example there are some sectors like in energy, if you look at some say for example you want to look at some ATF or something, right? So whether there is improvement in that or not, whether coal or other parts of electricity or energy, they are showing some good signs or what, right? So that is what we can analyze using this particular indicator or the sector performance, right? So I have taken much time in this, but this is equally important to get this analysis. That's why I have just simply shown you the full article, and if you need further article, like you can also take some macroeconomic article, right, or macroeconomic monthly review. So this monthly reviews are must if you cannot find time to read all the other articles, but I will strongly recommend you to read this article. All the students should read at least, right? So what is happening to the Indian economy, right? So what is the situation in terms of current account balance or maybe foreign investment, FDI, right, FPI, what is happening with that, right? So now we have analyzed that what is the growth of Indian economy. So there is a GVA growth, right? So it suggests that there will be 20% growth in Q1 in FY 2022, correct? So now this again supported with some data and some of the agencies, including CMI, we have given the forecast, right? So this is the GDP and GVA data which is available here. Depending on the macroeconomic situation, the GDP growth estimates may get revised, right? Even RBI and some other agencies, they also revise their estimate. So what is the growth that we have been expecting or projecting? So those numbers are given here, right? So Ministry of Finance is expecting close to 11% growth in this financial year, right? So and then there are some other agencies like even global agencies, global institutions are there, right? So they all have been giving their estimates, projections which are given here. What is happening to inflation, right? And what is happening to the central government spending, credit, this is again RBI data, right? And then what is happening to current account deficit or surplus, whatever it is, right? And you want to link it with the data, then also it is given here, right? So I think these articles are really useful to you. Please do read this. I'm left with close to 20 minutes now, so I'll cover the other data part, but which is again very simple, right? And please share your feedback about this training session, because this is very helpful to us to improve even on training part, right? Data you all know, but on the training part, if you have some suggestions, something which we need to improve on, you can share your suggestions or feedback, or if you like the training, you can also write a comment, right? Okay. Now, okay. So now, if you want to understand कि अभी ये डेटा पॉइंट्स क्या क्या है, जैसे कि हमने वहाँ पे स्टेट्स ऑफ इंडिया में देखा था कि कुछ इंडिकेटर्स है जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स, बट यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स है जैसे कि वहाँ पे बैंकिंग का ही स्पेसिफिक डेटा था, यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग का भी डेटा हमने कवर किया है, ठीक है? तो मनी सप्लाई क्या है, राइट? अगर आपको देखना है कि डिनोमिनेशन वाइज अभी करेंसी का सर्कुलेशन कितना है, 2000 नोट्स कितने हैं, कॉइन्स का सर्कुलेशन कितना है, राइट? So this is again RBI data which is available here,
you want to look at some data related to say external sector or maybe related to say investment, right? So in that case, you will be able to get all these indicators here. Again, this is very important corporate sector data, which is not available anywhere. This is again a from proprietary database of CMI. So आपको अगर देखना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको इंडस्ट्री वाइज देखना है कि इंडस्ट्री वाइज अभी क्या सिचुएशन है, ठीक है. दिस डेटा इज अवेलेबल नोवेयर एक्सेप्ट सीएमआई, ठीक है. तो आपको देखना है कि अभी क्या है, उसके कुछ रेशियोज आपको अंडरस्टैंड करने हैं. नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में भी आपको स्पेसिफिक देखना है कि गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में उसमें क्या हो रहा है, राइट. इंडस्ट्री वाइज आपको पिकअप चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है. हर एक का आपको मार्जिन देखना है या कुछ प्रॉफिटेबिलिटी देखना है, राइट. तो ये सब इंडिकेटर्स आप उसमें से सिलेक्ट करके आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है. I'm not going into each and every aspect now, right? Maybe I can show you some of the indicators. Then there are some data related to NBFCs which are available here. The companies which got registered with Ministry of Corporate Affairs is given here. And mergers and acquisitions, again, very useful indicator for many, is given here. Insurance related data is there, right? Corporate role, the restructuring, that is there. Then there is data related to capital market. So how the markets are performing over the period of time, right? So for example, the primary capital market and secondary market, how they have been performing, right? You want to analyze that during the COVID period, what was the performance, what is the performance now. Any time series you want to take, I think we have good data available from 1980 onwards, right? But some data would be available even before 1980, right? So there is a good time series available, and for various frequencies you can get data. You can get this data on monthly frequency, ठीक है. तो ये सारे इंडिकेटर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं. then म्यूचुअल फंड्स का कुछ डेटा है. Maybe not all indicators are relevant to all of you, but I would like to stress upon this one, consumer sentiments. अभी जैसे कि because of COVID अगर हमको समझना है कि अभी लोगों का थिंकिंग क्या है, वेदर अभी वो इम्प्रूवमेंट पे है, इंडियन इकोनॉमी राइट शेप में आ रही है, नहीं आ रही है. अगर लोगों को ऐसा है कि अभी थर्ड वेव आएगा, राइट, वी नेवर एक्सपेक्ट दिस टू हैपन, बट ऐसा कुछ है तो उनका सेंटिमेंट्स क्या है, राइट. सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स हमने दिया है मंथली फ्रीक्वेंसी में. आप अगर देखना चाहते हैं तो मंथ ऑन मंथ आप देख पाएंगे कि लास्ट ईयर लोगों का थिंकिंग क्या था, परसेप्शन क्या था, कि अभी करंट इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रही है नहीं हो रही है, whether they want to buy something new or not, right? If they want to buy, so is there a good time to buy something new or not, right? So आप अगर देखेंगे, let us compare some data pre-COVID. So the sentiment was, if you look at all India data, right? So it was close to above 105 in February, but now gradually it has gone down. In March it went down and then it is still down. It's below 100 level, right? तो अभी क्या सोच रहे हैं अप्रैल के बाद में लोगों का क्या थिंकिंग है, फर्दर उनका थोड़ा परसेप्शन ऐसा हो सकता है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स आर नॉट दैट पॉजिटिव, बट इट मे इंप्रूव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वंस थिंग्स गेट सेटल्ड, ठीक है. उसके बाद कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशंस क्या है कि सिचुएशन इंप्रूव होगी नहीं होगी. उसमें भी आपको द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है रूरल की रूरल पब्लिक अभी क्या सोच रही है, वेदर दे एक्सपेक्टिंग द थिंग्स टू इंप्रूव इन अ शॉर्टर स्पान और व्हाट, राइट. तो ये सारा डेटा आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं. अभी की करंट इकोनॉमिक कंडीशंस क्या लग रही है, दे फील दैट अभी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, राइट, या फिर लास्ट ईयर कंपैरिजन में अभी थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुआ है, सैलरी लेवल इंप्रूव हुआ है, या फिर वेजेस इंप्रूव हुए हैं, राइट. तो ऐसा वो उसका थिंकिंग क्या है वो अगर आपको देखना है तो उस केस में आप यहाँ पे इंडेक्स ये स्पेसिफिक देख सकते हैं, ठीक है. सो दिस अगेन data taken from our consumer pyramid household survey, but this can be a very good indicator to understand. अभी इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस का डेटा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल. टूरिज्म के रिलेटेड डेटा है कि हाउ मेनी टूरिस्ट आर कमिंग, हाउ मेनी टूरिस्ट आर विजिटिंग द मॉन्यूमेंट्स, राइट, their purpose, everything is covered here. To make tourist arrival, right. Okay, so this is their health we have discussed, education we have discussed, crime and election we have already discussed. Okay, now the best part about
about this database is you can literally check from which source we have taken any report, right? So suppose अभी मुझे समझना है कि suppose ये GVA का डेटा है, करेक्ट? उसमें मुझे देखना है कि फॉर एग्जांपल ये एनुअल डेटा देता हूँ मैं कॉस्ट एंड प्राइसेस पे, ठीक है? सो सपोज अभी ये सॉरी यहाँ पे मैंने लिया एब्सोल्यूट वैल्यूज, राइट? तो फ्रॉम 1961 ऑनवर्ड्स टू लेटेस्ट 21, राइट? अभी इंडिया का जीवीए का सिचुएशन क्या है? जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, एनडीपी, राइट? एंड सम अदर इंडिकेटर्स आर आल्सो देयर. नाउ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि ये कौन से सोर्सेज से हमने डेटा लिया है. तो उस केस में हमने यहाँ पे सोर्सेज भी दिया है, ठीक है? तो ये सारे सोर्सेज है. सीएसओ इज वन ऑफ द सोर्स, मोस्टली इज अनदर सोर्स, राइट? और उस कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने डेटा लिया है. सपोज यहाँ पे 3 अलग सोर्सेज है जहाँ से हमने डेटा कलेक्ट किया है, राइट? और वो डेटा अवेलेबल फ्रॉम डाउनलोड कब से? तो 51 से वो डेटा डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, ठीक है? तो अगर आपको देखने की डेटा सोर्सेज क्या है तो आप यहाँ पे एक टैब दिया है डेटा सोर्स, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं 51 से लेके अभी तक का लेटेस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है? अभी सपोज आपको देखना है कि कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या डेटा है. सपोज ये जीवीए बेसिक प्राइसेस है तो हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट से वो डेटा कलेक्ट किया. तो यहाँ पे लिया कंटेंट मार्किंग भी दिया है डॉक्यूमेंट 1, 2 एंड 3, ठीक है? तो ये कंटेंट 1 मींस ये डॉक्यूमेंट 1 क्या है? सो दैट इज नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स टेक्स्ट सीरीज, and this for all these 3 documents we have captured this data. While if we look at taxes का data, right? तो taxes का data document 1 and 2 में ही available है, right? तो ये 2 documents है वो data हमने taxes का collect किया है. So you will get content marking as well. You want to download the actual data, source data, sources or maybe source files. So you can click on this link. ठीक है? तो यहाँ पे आपको सारे सोर्स फाइल्स मिल जाएंगे. सपोज ये 51 का आपको डेटा डाउनलोड करना है तो भी यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है. अभी वो जो भी फॉर्मेट में अवेलेबल होगा, गवर्नमेंट ने एक्सेल में दिया तो एक्सेल में मिल जाएगा, पीडीएफ में होगा तो पीडीएफ में आपको वो डेटा मिल जाएगा. When we have some hard copies of some past data as well, right? तो अभी आपको सपोज ये देखना कि डेटा का सीरीज मुझे कुछ भी डाउनलोड करना है तो आई कैन डाउनलोड दोस सीरीज, राइट? एंड दिस ऑप्शन इज अवेलेबल हियर, ठीक है? सो वी आर लुकिंग एट द सोर्सेज पार्ट. अगर फर्दर हमको देखना है कि जैसे कि हम जनरली जो जीडीपी है, जीवी है, वो हम परसेंटेज टर्म्स में मेजर करते हैं कि जीवी इतना इंप्रूव हुआ, जीडीपी इतना इंप्रूव हुआ, राइट? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? यू कैन टेक YOY परसेंटेज चेंज, ठीक है? सो जैसे कि यहाँ पे YOY परसेंटेज चेंज किया है, राइट? तो उस केस में आपको देखना है कि अभी कितना एक्चुअली कितना जीवीए बढ़ा है, right? So we all know that it has been negative in last year, right? And for next few years forecast also, if you want to get, that is also available in economic outlook. I'll come to that part maybe in the next 2 minutes. Right, so you can select all this, whatever indicators you want to select. If you want to search some indicators, some reports, or some say indicators, right? You can search the indicators as well. You can set some reports as your favorite reports. We have already seen that in industry outlook, so I'm not repeating now. Even in Stats of India, we have seen that, right? तो ये बेजर, अगर बेजर का डेटा है 2004-5 का डेटा है, बेजर का 11-12 का है, कुछ बेक सीरीज है, कुछ स्पाइस सीरीज है, उस पर हमने काम किया है, राइट? सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट सम पास्ट डेटा. So we have done tremendous work on this macro aspect because that's where our core expertise is. Like we have all this database, and so we monitor from starting from company to the economy as a whole, right? So I hope you are able to understand sort of indicators, sort of data which is available in our database, right? अभी आपको एक लास्ट जो we have seen this analysis section broadly, but फिर मैं आपको एक बार इस पे लेके जाता हूँ. So first is statistics, which is all data. If you go to the analysis part, आप जो भी इंडिकेटर सिलेक्ट कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे. जैसे कि मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर सिलेक्ट करता हूँ तो ओनली एग्रीकल्चर रिलेटेड एनालिसिस उसका जो भी आर्टिकल्स होंगे वही आपको यहाँ पे मिलेंगे.
सारे आपके एग्रीकल्चर के रिलेटेड आर्टिकल्स और एनालिसिस उसका क्या बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज एनालिसिस सेक्शन। वहाँ पे आप जो स्पेसिफिक आपको चाहिए कोई भी इंडस्ट्री के रिलेटेड कुछ अगर आर्टिकल्स है तो इंडस्ट्री जाएंगे तो वो मिल जाए। So this is to just make things simple. We have created this analysis section. Like all these industry related reports are available here. So we're referring to industrial growth, right? What is the core industry's output, right? So everything is covered here in analysis section. Then comes forecast. So forecast is basically you want to see what is the forecast of GDP or GVA, or maybe the investments for next few years, right? Or maybe what is the forecast for say foreign trade, right? So those forecasts are available. So I'll just show you one of the forecasts. Let me take agriculture, or let me take inflation. So what is our forecast for next few years for say consumer price index, right? So we'll give next 5 years forecast and next 8 quarters forecast, right? So let us look at annual forecast. Okay, so where we are going to head in terms of inflation in next few years, right? So ये 21-22 का data दिया है. Again, the numbers in red are the forecasted numbers, right? आपको देखना है YOY percentage change देखना है. अभी कितना बढ़ेगा inflation in terms of percentage. So these are the index numbers, like inflation अगर 100 से हमने measure करना start किया है from this year 11-12, right, to this year 12, तो अभी उसका कितना index उसका क्या है, index numbers क्या है, right? So all the types of various, let's say, covered under CPI, they are given here, right? So be it say pan and tobacco, or maybe food and beverages, or some others. Correct. And so this is the forecast section. You can also look at some quarterly data if you want. Then quarterly you will get one more tab called as what is the quarterly change, what is the quarterly expectation of increase in inflation. Correct. So I think I've covered a document section like similarly like what we have seen in States of India. You can also get the source documents here. For example, I want some source documents related to foreign. तो ये हमने कौन से सोर्सेज से ये डेटा लिया है हमने, राइट? और सपोज ये एचएस क्लासिफिकेशन है तो उसका 17 का है, उसमें आप फर्दर जाएंगे तो आपको फर्दर उसका सारा डेटा मिलेगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से हमने कुछ डेटा लिया है, आरबीआई का जो हैंडबुक है वहाँ से हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया है। सो इट मे हैपन दैट फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक इंडिकेटर, सिंगल स्पेसिफिक टाइप और सिंगल स्पेसिफिक section, we have been getting data from several other authentic sources, right? So, but these are all government sources. So you can just rely on this data. You can just check this data with whether it's relevant to you. If you want to download some data points, some source documents, that is again available to you, right? So these are the documents released by the Ministry of Commerce and Industry. It was this day before yesterday only, right? So I think we have 5 more minutes to go, and I want to make sure that you have been enjoying the session. You have liked the data. You have to assure me that you will use the data, because I think the university, the project has subscribed this tremendous data. There is a very good support from all the people who are associated, right? And for the students' benefit also, this is really something which as an individual I appreciate, because the university is thinking much for you, right? So you should also appreciate and you should also use this data, right? So I think I have covered the major part, but if you go to dashboard, you will get the dashboard related to markets and economy, Indian economy, right? तो सपोज अभी आपको देखना है कि इंडियन इकोनॉमी में सपोज अभी जो हम बोलते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट जिसे बोलते हैं कि लाइक निफ्टी का परफॉर्मेंस क्या है, राइट? तो निफ्टी वेदर उसका ग्रोथ है, डी ग्रोथ है, एफआईआई और म्यूचुअल फंड सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट? तो थोड़ा उसका अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सिचुएशन कि अभी क्या होता है, राइट? एफआईआई इज इन्वेस्टिंग और नॉट। टू
उसका ट्रेंड क्या है वो आप समझ सकते हैं, FI निफ्टी फ्यूचर्स का क्या परफॉर्मेंस है, एक्सचेंज रेट से डॉलर्स के सामने है या फिर यूरो है, राइट, या फिर आपको देखना है कि क्रूड प्राइसेस में क्या हो रहा है, गोल्ड प्राइसेस में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या हो रहा है, राइट, माइट बी देयर, करेक्ट, यूरो के सामने हम परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हैं। तो ये सारे मार्केट लेयर इंडिकेटर्स है, उसके चार्ट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और टेबल्स के सामने पहले देखा था इंडस्ट्री आउटलुक में, ऐसे टेबल्स के बेस पे हम ये चार्ट प्रिपेयर करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमी रिलेटेड सारे चार्ट्स एंड टेबल्स अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल यू वांट टू अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर ग्रोथ, कैसा ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ है, जीडीपी का ओवरऑल ग्रोथ क्या है, राइट। तो आप यहाँ पे ये डेटा देख सकते हैं, जैसे क्वार्टरली डेटा, तो क्वार्टरली ग्रोथ अभी जो है वो दिख रहा है यहाँ पे। In terms of investments are coming, it is increasing, decreasing, what is the trend, in terms of foreign trade, what is are we pairing or not, right? उसके बाद में आपको क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ देखना है, कॉर्पोरेट के मार्जिन्स क्या हो रहे हैं, इन्फ्लेशन, WPI, CPI में क्या सिचुएशन है। तो ये सारे indicators, सारे डैशबोर्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, these are the dashboards which are available. In favorites you can search some reports, right? You can see your favorite reports here in report sets if you have set some, right? So these are my sort of favorite reports, but you can create your own, and you can also search some report. And one more option is there in favorites is the mail alerts, email alerts, right? So you can subscribe to some of the tidings or analysis. Tidings you will get frequently, analysis will come to you once we write some analysis on the indicators or chapters of your choice, right? So you can subscribe to these email alerts. These are really good to have. You'll get update. Suppose we are sorry. Suppose we are updating some of the news, something on a specific topic or chapter. You will get it in your inbox. As we discussed in industry outlook, we have similar data in economic outlook EODX. And there is accelerating feature which we have already discussed in industry outlook. So you can also download all the data in your Excel file without even coming to this particular browser, right? Or without even logging into economic outlook, right? So you can use this particular accelerating feature. You can use this integrated search option. And last 1 minute, I'll just explain this release calendar. So whatever data government releases on which date, right? So if there is some money supply data, some forex reserve data, or some other data which the government is releasing, so in any case, if you want to understand on which date, at what time they are releasing the data, right, you will be able to get it from this release calendar. So if there is some tentative date which government has given, some reserve money data is going to get released, money supply, civil aviation data, right, 8 core industries data, major force data, right? So on which date government will release which data? So उसका एक release calendar है, plus a must read for all the students if they are seriously looking for say some macroeconomic understanding. Please do read these technologies. From the base year to the say understanding national accounts, right? Why there is changing base year, which are the sources from where we get this data. Everything, each and everything is covered here, right? So I think I'm done with my part. Thank you so much for your time. Thank you so much for your patience. Thank you so much for being there till end, right? So thank you everyone. Thank you so much, Pundi sir, Yogesh sir, all the faculty members of Anand Agriculture University. Without even mentioning Yogesh Godase sir's contribution or support from subscribing commodities to till now, I cannot end this session. So thank you very much. Thank you each and every faculty member. Thank you all the researchers. Thank you for being there and supporting us. Thank you so much. Anything else, sir? Any questions? I doubt there will be questions because we are running over time. So I doubt it will be there. But still, if there is something, I can take up. There is no question as of now, so. Okay. Yogesh sir, thank you so much again. It's nice to see. Thank you very much, sir, Prashant sir, for educating us on very detailed information.
And so I would like to invite our core co-PI of Human Resource Management, Dr. Y.L. Arcer, for vote of thanks. Over to you, sir. Thank you, Shraddha. I think from 1.5 days we are busy with the one of the program, that is the we have planned in a very short duration, but it is quite effective. Just I want to tell you something, sir, that this program is basically we are designed for the faculty and students, and it is for your surprise that I'm telling that from last tomorrow there are more than 300 to 400 viewers are already there. Maybe it will be increased later on. Oh, great. So that is good. And as far as this program is concerned, these are 3 sessions which we have planned, and it is going on smoothly. So as I have to present the vote of thanks, and just before that, I just give you some remarks about this orientation program. We have got very good remarks from the different faculties as well as students, and some of the, we can say, the university who are not the part of Gujarat. Okay. Still they are watching this. So I think in a long run, you can get the good marketing of your products, and people are utilizing your data, and it is going on. Great. And I can say that some of the universities who are not associated with the project, that is in the Gujarat itself, or they are not part of the project, they also appreciate the this webinar. So it is good one. And in a long run, we are again try to call you for some of the more events such like this. So on behalf of you can say Naib Caste and the Center for Market Intelligence, thank you so much, Prasant, Mr. Prasant Joshi, for being present for more than 1 day with us. And it is going on, and we are think for some more relationship with you. I also would like to thank the Mayank Dedia for the in the morning session, in the first session which he has carried out. It is good one. And right now we can get some of the remark from the student also, sir. We can get the paper very easily with the library, and your suggestion for the students who are not the part of, they are not in the AU, but they are studying, we try to contact with the DIT as well as the University Librarian for to carry out somewhat open up the account, and they can utilize your data. In the long run, we can say that we can get so many good paper people can publish from utilizing your data. So you have mass publicity in the long run. Thank you so much. It's all thanks to you, sir. With all your support, we are, and I really appreciate that we have conducted this session, because be ready. You can get the good remarks, and you can get the you can show that we have organized this webinar. If any help is required from our side, we are trying to help you out. There is no issue. But in the long run, if you can get some one database, we can try to utilize it. That is sure. Sure. Okay. Okay. Thank you so much for your support, sir. Thank you, everyone, each and everyone, for being there. Thank you. Okay. Thank you so much, sir. Thank you, Parth. Yes, sir. Shraddha. Yes, sir. So thank you all the participants for joining the program. Our next webinar is on 20th of July on our special guest lecture on Tuesday. So I will request all the participants to rejoin it. Thank you. Just I want to tell you to the participant that webinar is we are special series lecture we are planned for the people who are working in a sales job. So that webinar, that special series lecture is based on the what are the roles and responsibility and regulation regarding sales personnel. So it is quite helpful in a long run when you are doing the sales personnel job. That special act is there, the provision we are going to discuss. So all the students, you can get the benefit out of it. And person who are looking for that is he's also done the HR practices, and he's associated with the consultancy. So he may guide you more better than that, because he's working in the pharmaceutical and other companies. So his experience, we are going to utilize it. So all the participants, please register on the 20th event. It will be helpful for you in a upcoming future. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir.